मैं वही सोचूं लाइक सडनली कैमरे शिफ्ट में इतना डिले कैसे हो गया बट वेलकम वेलकम कैसे हो आप लोग वाओ वी आर बैक विद द स्ट्रीम भाई इस चैनल पे नॉन वॉच अलोंग स्ट्रीम्स भी होती हैं वी हैवंट डन इट इन अ लॉन्ग व्हाइल बिकॉज लाइफ इज अ बिट हेक्टिक बट आज अपेरेंटली डबलिन में स्टॉर्म आने वाला है कल सुबह तक आ जाएगा सो वी हैव बीन गिवन अ वार्निंग टू स्टे इनसाइड नाउ And I was like, ठीक है, क्लास हो गई आज. Let's sit down and talk about the Champions League because the Champions League match week यार दोस्तों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था. I uploaded a video talking about Arsenal, talking about City and PSG. We'll talk about those games. We'll bring up Madrid as well. उनका क्या टर्न अराउंड हुआ है चैंपियंस लीग में. स्पोर्टिंग, बायर्न, लिवरपूल, ऑफ कोर्स, बारसा का जो गेम था बेंफिका के अगेंस्ट है, फैंटास्टिक गेम. We'll talk about that as well. But before that, how are you guys? Bits, kaise ho? Chaitanya, how are you? Karan is also here. How are you, Karan? You lost your game, I think. Who was Villa playing against? I forget. But Villa was playing against somebody, and I think they lost 1-0. Sudipta is here. Rupinder is here. Sudipta again. Sudipta की favorite three teams चैंपियंस लीग के टॉप 8 में है. फैंटास्टिक. तन्मय, अब्दुल्ला, अनन्य, आदित्य, आर्यन, पार्थ, रुपिंदर, एवरीवन मैन, एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम. टूट गया मैं तो सिर्फ फील फोर्डन. सिटी की तो ऑफ कोर्स बात करेंगे ही करेंगे. बट हाउ आर यू गाइस? कैसे हो? शो अस दैट वन पीस टी. It's just this, man. It's just Luffy punching stuff. The thing is this: One Piece merch is very very nice, but I can't get through One Piece, man. I'm sorry. मैं नहीं हो पाता यार. It's just that जब तक कुछ आर्क खत्म होता है एंड यू कम टू अ फिलर एंड यू लुक एट द एपिसोड लिस्ट एंड यू लाइक इतने हजार एपिसोड्स एंड देन समटाइम्स यू सी स्निपेट्स ऑन लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह कि अच्छा ये हो रहा है वन पीस पे. यूर लाइक भाई ये स्टोरी कहाँ से कहाँ आ गया. अभी तो ये लोग साले ट्रेजर के पीछे चल रहे थे. अभी तो देव रिक्रूटेड दिस पर्सन. अब है ये क्या, ये गैर वो गैर, सफेद बाल ये वो, पता नहीं क्या लूफी पूफी से कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ भी होते रहता है यार. मोनाको, या दे लॉस्ट टू मोनाको. बट यस, वो तो छोड़ो यार. वन पीस पे तो आई कैन रैंट फॉर द इंटायरिटी ऑफ माई लाइफ. द चैट विल बी अ लिटिल डिलेड. आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लेटेंसी. यूजुअली जो मैं प्रोटेक्शन के लिए डालता हूँ लेटेंसी, ताकि कोई आके स्ट्रीम पे कुछ गंद बंद ना कर दे. बट या, सिटी गॉट स्मोक्ड. यस, 4 फॉर अस, 0 व्हाट. डांडाडान देख लो, देख लिया भाई डांडाडान तो ऑफ कोर्स. क्या हाल? बिल्कुल बढ़िया बिपिन भाई. हाउ आर यू? आई एम एट 920th episode. It's so good. The thing is this, yeah, I don't want to invest 920 episodes. I'm sorry. I'm sorry. I think everyone की जिंदगी में ना, okay, let's just, before we get to football, in everyone's life ना, if you have to commit for a long show, I think when it comes to long shows like 100 plus episodes, सिर्फ एनिमे की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट शोज इन जनरल की बात कर रहा हूँ. I think you can do like maybe 10 of these series throughout your life जहाँ पे like you can't you commit to a long series. So you commit to a Game of Thrones maybe, which by the number of hours is a long series. Commit to Friends, maybe Big Bang Theory or How I Met Your Mother. A couple of animes, Naruto, Boruto अगर मिला लो उसमें तो, Attack on Titan with the number of seasons, Full Metal Alchemist, ठीक है. But I think One Piece ko if you start committing ना, I think you end up eating like 3 other animes and shows जो आप देख सकते हो. You can skip one of the film. I tried everything, Rupinder. I tried. There was this Reddit post जिसमें एक किसी बंदे ने एक लिस्ट बना दी थी टू स्किप ऑल द फिलर एपिसोड्स. अब आर्क टू आर्क ही जाते रहो, आर्क टू आर्क, लाइक वॉच दिस एपिसोड टू दिस, skip इधर से इधर तक, watch this episode to that, and I tried it and I still couldn't do it, man. I just couldn't do it. Baba is losing his coolness. I was there in the chat, man. I was there in the chat. Saw Baba lose his mind after Garnacho. I started to watch Loki season 1 and season 2 just to cover new Marvel projects will be releasing. Fair enough, fair enough. All right, Champions League, Champions League. मैं एक बार UCL results का साइड पे टैब खोल देता हूं because match week 7 had some fantastic games. Although कोई ऐसा मतलब apart from City PSG कोई big game नहीं था. Um, but I really enjoyed. I really enjoyed this match week. Yeah. I think you can see it. I think you can see it. Okay, wait. Let me just
see if I can turn myself into a smaller circle. All right, of course, I can turn myself into a circle. Okay, so here is what we are seeing now. Monaco versus Aston Villa was a 1-0. I didn't watch this game. I didn't watch Atalanta game. I did not watch Atleti Leverkusen. I did watch Barcelona versus Benfica. Now, Barcelona versus Benfica, bhai, what a game it was, right? It started off really, really well. Benfica, I think they started the scoring. Then I think Barca ने equalize किया था Lewandowski के साथ एक penalty. And the game with the weather, with the rain and everything, it looked like a very, very weird game जहाँ पे मतलब कुछ भी चल रहा था. Um, what I really enjoyed about this game though was the intensity that Benfica was playing with. मतलब बार्सिलोना को प्रेशर पे डाल रही थी. एक पॉइंट पे लग रहा था genuinely बार्सिलोना के पास कुछ आंसर नहीं है. But then a couple of comedy goals happened, you know. Like, of course, Chesney tripped his own keeper. Chesney conceded a penalty. And at that point of time, it looked like, you know what, Benfica at their home in this deluge of a weather, nikal legi Benfica, man. But then, I mean, their keeper tried to kick the ball. Rafinha के सर से लग के वो भी बॉल सीधा गोल में गिरी. Okay. Another goal from a corner from Eric Garcia. जो लोग कह रहे दक्ष भाई एरिक गार्सिया ले लो हमसे 20 मिलियन में प्लीज. Eric Garcia scores from a corner. And at the end, man, Mr. Rafinha, भाई यार Rafinha को of course क्या ही बोल सकते. But before that, chat, let's just talk about two things I want to talk about. Okay, chat. Now उस game को I think आज Tuesday Thursday हो गया यहाँ पे. It has been 2 days since that game, chat. ठीक है. अब nobody's gonna judge, especially if you're a Barca fan in the chat. Chat, tell me this. Was that Lamine Yamal thing a penalty? Tell me this honestly. Did Lamine Yamal? I'll tell you what I saw, okay? And I'm pretty sure this is what everyone saw. Lamine Yamal made it through the defender. The defender touched Lamine Yamal on the shoulder. And Lamine Yamal की टांगों को ना मतलब हड्डियों का नूडल बन गया. And Lamine Yamal fell. And I was like, surely they're going to overturn this. Surely they will overturn this. And they did not. I'm like, अच्छा ठीक है. कोई बात नहीं. It was a dodgy penalty, but ठीक है. Lennon says it was 100% a penalty. Okay, Lennon. See, I'll tell you something. And I don't want to make it about Arsenal and stuff. I've seen much more stronger penalties not given in this season of the Champions League. Also, I've seen pushes not given. I've seen tackles not given as penalties. If you remember last season, if you're an Arsenal fan, um, yeah, that's what I'm saying. I think pulling the jersey is sure a foul, but when have you not seen a jersey pulled? And if it's talking about pulling a jersey, you saw what happened in the last run of play, right? When I think Florentino Luis था या जो भी था, brother, उसकी तो खींचनदानी धक्का मुक्की सब हुई थी ना. खैर, my point is this. It was a pen because the ref gave it. So fair enough, the referee considers that as a penalty incident. Um, सो या एग्जैक्टली ना इफ यू एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी बोलता हम जीत गए, मुझे एक घंटा फर्क पड़ता है. जैसे जब हम स्पर्स के अगेंस्ट जीते थे और हमने वो कॉर्नर से गोल मारा था, मुझे एक घंटा फर्क पड़ता है वो कॉर्नर था या नहीं था. ठीक है, नहीं था कॉर्नर बट हम जीत गए, सो क्या फर्क पड़ता है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक यू आल्सो हैव टू, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन फॉर यू आल्सो टू से कि लाइक दक्ष भाई मतलब इट वाज फाइन, या वी वर lucky that the referee gave it a soft penalty. But I personally feel that that shouldn't have been a pen for Lamine Yamal. And if that was a pen, I am very surprised that they did not give the last incident in the Barca box as a pen. And to be fair, they checked it and they just felt it wasn't a penalty. तो ठीक है, अब उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने चेक भी कर लिया दोस्तों. So if they've checked it also, now what can you really say? So in that context, I think um, Barcelona won. It was a crazy game. Benfica must be so heartbroken though यार. उनको लग रहा होगा कि लाइक हमने सब सही करा. At home अगर आप बार्सिलोना के अगेंस्ट 4 गोल मारते हो, you should be winning, man. But
फाइव इज क्रेजी। फाइव फाइव खाना उसके लिए। आई डोंट नो। ना उसको भी देखो जाके, बेनफिका वाला प्लेयर का फुट फर्मिन पे आया, उसके बाद फर्मिन का शोल्डर पर। देखो अनोनिमस भाई, मैं एक ही बात कहता हूँ, जब ना अपनी टीम, और ये हम मेरे साथ भी होता है, जब अपनी टीम के ऊपर बात आती है ना, सारे जस्टिफिकेशंस निकल पड़ते हैं। अरे गौरव भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गौरव भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। भाई सब लोग गौरव भाई को हैप्पी बर्थडे बोल दो। खैर जो भी है, आई पर्सनली फेल्ट दैट उसको धक्का मिला था। ही गॉट पुश्ड ट्वाइस, वंस इनटू शेस्नी एंड एक बार फर्मिन पे। देखो धक्का तो यार आप कुछ भी कह दो कि उसका पैर इधर पड़ा, उसका उधर पड़ा, इट वाज शव इन द बैक इज व्हाट आई फेल्ट। बट कोई बात नहीं। या एग्जैक्टली, मेरे को मिस वही लग रहा है बिट्स भाई, दैट you know it's fouling is subjective. Maybe in another game same incidents will be given a pen or not given a pen, depends on the referee completely. I don't think it was a corruption wala sort of things. I don't think it was a corruption. तो आप लोग जो कह रहे हो कि लाइक करप्ट बार्स एंड करप्ट दिस, बट आई विल से दिस, आई थिंक ये एक ऐसा गेम होगा जहां पे दोनों मैनेजर्स ना खुश नहीं होंगे. In no way you can tell me that Hansi Flick would be happy with the fact that Barcelona conceded 4 goals. And those 4 goals, apart from the penalty जो शेस्नी ने मारी and जो एक बार उसने खुद के डिफेंडर को टैकल कर दिया था, all of the goals were very well made, like half line say they were putting the balls through, and they could have had plenty more, by the way. I think Benfica probably missed a couple of more chances. And so I'll just say this, Flick won't be happy, Bruno Lage won't be happy, uh, but Barcelona get 3 points and they made a fantastic comeback and they're in the second position. And why that's done. The top is sorted for them. I think in the worst case scenario, अगर बारसा को अगर हम टेबल भी देख लेते जल्दी से, oh man, where is the table? ये रही टेबल. अगर हम टेबल भी देख लेते, वर्स्ट केस सिनारियो, लेट्स से बारसा वर्सेस अटलांटा में बारसा हार भी जाती है, ऑल्दो उनके होम पे आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू लूज, एटलीस्ट ड्रॉ हो जाएगा वर्स्ट केस सिनारियो. इन द वर्स्ट केस सिनारियो आई थिंक वो थर्ड तक ही गिर सकते हैं. नो वे इंटर इज स्कोरिंग 8 goals. नो वे. आई थिंक आर्सेनल का जिरोना के साथ है अवे फ्रॉम होम. जिस तरह से हमारा अटैक एंड कंसिडरिंग हम सिटी को खेलेंगे 3 दिन बाद, आई डोंट थिंक वी गोना स्कोर 4 goals एटलीस्ट. बहुत कम चांसेस. तो द एब्सोल्यूट वर्स्ट केस डिजास्टर सिनारियो फॉर बार्सिलोना is if they draw and Arsenal win and Inter win. ज्यादा से ज्यादा अगर आर्सेनल ने 4 गोल भी मार दी जिरोना के अगेंस्ट, बारसा विल कम थर्ड, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक पोजीशन टू बी इन. बट 99% दे फिनिशिंग सेकंड यार. एंड देखते हैं यार लास्ट गेम में क्या होता है. मे बी दे कुड इवन टॉप इट बिकॉज उनका जीडी लिवरपूल से ज्यादा है. एंड इफ लिवरपूल somehow ड्रॉप पॉइंट्स, वो लिवरपूल प्लेइंग एट द एंड, मुझे तो ये भी नहीं पता. बट इफ लिवरपूल somehow ड्रॉप पॉइंट्स एट द एंड, मतलब हार जाते हैं, तो बार्सिलोना कुड इवन फिनिश द लीग फेज टॉप ऑफ द टेबल. बट यार फैंटास्टिक पोजीशन फॉर बारसा टू बी इन. ये तो आपको मानना पड़ेगा जिस तरह से बारसा खेल रही है. ऑलराइट, लेट मी जस्ट सी सम फंडिंग्स. आई थिंक एक मेंबर, 2-3 मेंबर चैट्स आए हैं. Harshit became a member for 5 months now. Great win last night. Come on, you guys just need some signings, says Harshit. Harshit, yeah, we'll definitely talk about it. But thank you for being a member for 5 months. Appreciate it a lot. Karan has joined the membership. Karan, Aston Villa fan, thank you so much. I've put in the Discord link in the members only community tab. Aap Discord bhi join kar sakte hain. We need a Villa fan, man. We need a Villa fan already there. Oh yeah, they're playing PSV. Should not be that much of a bother anyway. Especially agar Arne Slot is so used to Dutch football. Liverpool versus PSG. Fair enough, fair enough. If Liverpool and Barca stay at first and second, they can face each other only in the final. Yeah. If they keep on winning all their games, the only time first and second will meet is in the finals. But ये table is a liar. Discord वाली कब करोगे? I will try and do one at the end of the month, or maybe like maybe playoffs से पहले यार करण, before the Champions League playoffs, we'll do it in that week. Okay, so yeah, Barcelona वाला game, fantastic game, good sort of remontada for Barcelona. अच्छा लगा देख के. And Barcelona of course being top. Good news for them also. Araujo ने contract extend कर लिया. एक point पे लग रहा था वो यूवे जाने वाला था, but he has extended his contract, so good for them. I think Gerard Martinez ने भी contract extend कर दिया. I think Pedri का भी contract extend हो रहा है. So this is good. By the way, look at the number of red cards, man, in this game week, man. Crazy, crazy. बायन वाले गेम में भी था, सेल्टिक वाले गेम में भी था.
लील को भी मिला, पीएसवी को भी मिला, बेनफिका को भी मिला, एटलेटी लेवरकूसन को भी मिला। Athletic Leverkusen. I didn't watch the match. I watched the highlights. Leverkusen took a lead. Then I think किसी को injury हो गई थी, if I'm not mistaken, for Leverkusen. And a 10-man Atletico threw a Julian Alvarez brace, man. Fantastic, fantastic. Diego Simeone doing it again. Atleti कहाँ है table पे? Atleti Madrid are fifth in the table. Wow. So Atleti are fifth in the table. Leverkusen dropped down to eighth. एंड टॉप 8 यार चैट टू बी फेयर हम में से काफ़ी लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इटालियन क्लब्स इतने होंगे, अगर इटालियन क्लब्स होंगे तो यूवे होगा उसमें, सब सोच रहे होंगे बट इंटर बीइंग देयर आई थिंक एवरीवन एक्सपेक्टेड। मिलान आई वुड से इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, आई एक्सपेक्टेड देम टू जस्ट बी आउटसाइड ऑफ टॉप 8 एंड अटलांटा सेम। मेरे को अभी भी याद है जब आर्सेनल ने अटलांटा को खेला था तो Gasperini said that our aim is to be in the top 24. Arsenal's aim will be in the top 8. So our aims are very different from Arsenal. But Atalanta को देखो यार, they are in the seventh position right now. It's crazy good from them. Um, ओके, लिवरपूल वाला लील वाला गेम मैंने नहीं देखा, ऑब्वियसली सारे गेम सेम टाइम पे चल रहे थे तो देखा नहीं। यूवेंटस विद अनदर ड्रॉ, दे हैव टू चेंज दिस अराउंड। फिर ऑफ कोर्स बोलोनिया बीट डॉर्टमंड इन अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फैशन एंड दैट आल्सो लेड टू द सैकिंग ऑफ नूरी शाहीन। तो नूरी शाहीन तो भाई खत्म, तो हमारे टॉप 8 चांसेस होंगे इसलिए जीत जाना। अच्छा, ब्रेस्ट इज आउट ऑफ टॉप 8 आई हर्ड, यस, बिकॉज शाख्तर डोनेट्स्क ने ब्रेस्ट को हरा दिया था। इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट कंसीडरिंग द पोजीशंस ऑफ बोथ टीम्स, बट होम पे था इसलिए हो सकता है कुछ कुछ डिफरेंट हुआ। लाइप्जिग yesterday notched their first win of the Champions League campaign, उन्होंने 2-1 हराया। आर्सेनल के दोनों टारगेट्स सेस्को और ग्योकरेस वर ऑन टारगेट भाई, एंड एंड में लाइप्जिग ने हरा दिया था उनको। लाइप्जिग का एक डेविड राउम गोल डिसअलाउ हुआ था। स्पोर्टिंग tried to create a lot of chances, but I think Harder missed a lot of chances. फिर बेंच से ग्योकरेस ने आके स्पोर्टिंग को एक गोल मारा। इंटर अगेन, आई मीन they're gliding past this league phase. उन्होंने फिर से 0 गोल्स कंसीड करे, उन्होंने एक ही गोल मारा है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक इंटर आर द ओनली टीम, either it's Inter, no, I think it's Liverpool have only conceded one goal maybe this entire Champions League campaign, and Inter and Arsenal I think are second. आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल आराम से करेंगे, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। लेट मी सी कुछ और अगर फैन मेंबर से कुछ फंडिंग वंडिंग नहीं आई। ओके कूल। एंड सो no Sesko news. In fact, the Sesko news is that it's unlikely. It's not. Most likely, it's not gonna happen, though. So, yeah, it's time to let that dream die in peace. I don't think it's gonna happen now. Um. So yeah, Leipzig versus Sporting में Leipzig ने beat कर लिया था। Shakhtar Brest ठीक है, Inter ने beat कर दिया था। Bayern Feyenoord you have to talk about, man. दिस इज, अगर आप ये गेम देखो, इसके आप हाइलाइट्स भी देख लोगे, आपको ना दिख जाएगा इस गेम में क्या डोमिनेशन किया था बायर्न म्यूनिख ने। एंड दे जस्ट हिट द पोस्ट, हिट द कीपर। बाय द वे, बाइलाओ जो उनका कीपर है फायरनॉर्ड का, ओ माय गॉड व्हाट एन इनसेन परफॉर्मेंस बाय बाइलो मैन। हैरी केन के शॉट्स रोक रहा है, साने के शॉट्स रोक रहा है, कोमन के शॉट्स रोक रहा है, मूसियाला का हेडर रोका, सेल्फ जब क्लियरिंग हेडर मार रहा था कोई फाइनआउट का डिफेंडर, वो गोल की तरफ जा रहा था, ओन गोल करने से बचाया। बाइलो हैड अ फैंटास्टिक गेम मैन, इट्स एन इनसेन अमाउंट, बहुत बढ़िया करा था। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक बिकॉज माई टीम प्राउडली रिप्रेजेंट्स यूरोपा लीग गेम्स भी आज है, उन पे भी बात करेंगे। या भाई, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपने रिव्यू में भी यही कहा था। इफ यू सी दिस गेम, इफ यू सी द स्टैट्स, लुक एट दिस, 30 शॉट्स, 6 ऑन टारगेट, 80% possession, almost 7 times the number of passes of 90% accuracies. भाई आई एम 13 corners. भाई this was a completely dominating performance यार, from Bayern Munich. And look at the score, man. Look at the score. मतलब फायनॉर्ड ने एक मारा ऑन द काउंटर अटैक, दूसरा गोल राफाल गरेरो की मिस्टेक की वजह से पेनल्टी हो गई थी, तीसरा गोल ठीक है, आई मीन इट केम ऑफ अगेन अनदर काउंटर अटैक, but it's left Bayern Munich a little bit worried because they're still in the top 24, man. But 15th is not where Bayern Munich wanted to be. Look, to be fair, they're still on 12 points. And जो 13th पे है, they're like 8 points. Sorry, जो 8th पे है वो 13 points पे है. So it's like
technically the gap is enough to, like, they can, if the results go their way, Bayern Munich can still come into the top 8. But this was a very damaging defeat. Now, who do Bayern Munich play next actually? They play Slovan Bratislava, which I think they should be smashing. अगर आपको याद हो, अर्लियर इन द कैंपेन बायर्न म्यूनिक ने आई थिंक जागरेब को 7-2 या 9-2 ऐसे कुछ करके हराया था, मुझे याद नहीं. बट बायर्न म्यूनिक हैड अ वेरी डोमिनेंट स्टार्ट यार इन द चैंपियंस लीग. सेम है टू बी फेयर स्पोर्टिंग. अगर आप स्पोर्टिंग के मैचेस देखोगे चैंपियंस लीग में, Sporting started off fantastically well. Sporting were in the top 8. They beat City. They beat other teams also. वो Arsenal से हारे थे. And then अब से since Amorim left, they've just not done anything in the Champions League, and they're now on the verge of being knocked out of the top 24 man. So it's not a nice look for either Sporting. It's not a nice look for Bayern Munich, who are in 15th, but they're like 1-2 points behind the actual competitors, man. 9-2 उन्होंने हराया था. सही बोला. Everyone criticized the new UCL format. Now it's pure cinema and everybody's enjoying. इतनी unpredictability है, haha. सही बोला Illusion भाई. Because now what's gonna happen on the last day of the league, every match is gonna be played on the same time, and this table will move in real time. तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो फिर से ट्यूसडे वेंसडे स्प्लिट हो जाए. मान लो ऐसा है कि बायर्न को पता है, कि लाइक ये जैसे मान लो लेवरकूजन है, लेवरकूजन का मैच मान लो वेंसडे होता और किसी का मैच ट्यूसडे होता, तो लेवरकूजन के जो मेन ओपोनेंट्स है जो टॉप 8 के लिए फाइट करने वाले, दे ऑल ड्रॉप पॉइंट्स. एंड लेवरकूजन लाइक, ओ अच्छा 8th तो प्रीटी मच सिक्योर्ड है, सो लेट्स जस्ट सेंड द किड्स नाउ. ऐसा नहीं होगा. नोबडी कैन टेक चांसेस, बिकॉज इफ यू लुक एट द टेबल चार्ट, ठीक है, टॉप 3 भूल जाओ आप. इनफैक्ट आई वुड से इवन टॉप 4 भूल जाओ. लुक एट दिस जेपेडी फ्रॉम लाइक 5th ऑनवर्ड्स, ठीक है. आप 5th ऑनवर्ड, सर ये मेरा कैमरा भी साला. लुक एट दिस जेपेडी फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स, ओके. 15 15 14 13 13 13 13 13, 11th भी 13th पे है, 12th भी 13 पे है, 13 भी 13th पे है. लुक एट दिस, ऑल द वे फ्रॉम 13 से लेके 7th तक, like that's around 7 teams who can either be in top 8 or outside of top 8. You look at closer to the top 24, there are teams जो 10 10 10 8 8 points पे भी हैं. Some of these teams can still get into the top 24. Some of these teams can fall out of top 24. And ये सारी games, ये टेबल बिल्कुल लाइव एक साथ मूव करेगा. एंड जीडी इज गोना काउंट सो मच मैन. सबके जीडीज भी देख लो. हमने कहा था 7 से लेके 13. अटलांटा 14 जीडी है, if I'm not mistaken. Yeah, they have more GD than Liverpool and Arsenal also, भाई. Fantastic from Atalanta. So Atalanta 14 GD, but बाकी देखो 6 5 3 2, not much in it. A draw can be devastating. A big win is necessary. That's insane when you think about it. स्टार ब्रेस्टवा के 2, डॉर्टमंड का 8, बायर्न का 6. इमेजिन यू आपने +5 जीडी एक गेम में कमा ली और उसके बाद से आप +1 के नेट पे ही चल रहे हो. दैट्स इनसेन. 5 तो, एंड देखो, द हायर यू आर इन द टेबल, ऑफ कोर्स टॉप 8 के नीचे सारे ही खेलेंगे, बट द हायर यू आर इन द टेबल, द बेटर चांसेस यू हैव ऑफ एन ईजियर ड्रॉ एसेंशियली. मेरे को तो वही लगता है. So, yeah, I mean, City can still finish 23rd. No, City can finish 21st, whatever. City के लिए 21st भी अभी चलेगा. बट वही वाली बात है. अब मान लो सिटी ने ड्रॉ कर लिया ब्रूज के अगेंस्ट. ब्रूज ने अगर ड्रॉ कर लिया, दे विल बी ऑन 12 पॉइंट्स. नाउ दे देन जस्ट हैव टू होप दैट स्टुटगार्ट वर्सेस पीएसजी होगा. सो वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम इज गोना ड्रॉप पॉइंट्स. ठीक है. बेनफिका, लेट्स सी बेनफिका का किसके साथ गेम है अगला वाला. Benfica are playing Juve. ठीक है, so Benfica can also drop points. PSG and Stuttgart में से one is gonna drop points. Who is Sporting playing? Bologna. They are like at the bottom of the table. We'll do this exercise also, by the way. ठीक है. So if Sporting drop points, if Stuttgart PSG में से एक drop points, and Benfica who are playing Juve also drop points, क्योंकि Juve famously draws बड़े खेलती है. Bruges essentially just need a draw to go through. एंड ड्रॉ इज नॉट इनफ फॉर मैनचेस्टर सिटी. एटिहाड पे गेम है, बड़ा मुश्किल होने वाला है. ठीक है, बट एक ड्रॉ फ्रॉम ब्रूज एंड दे आर थ्रू. दैट इज ऑल लिटरली व्हाट ब्रूज नीड्स. ना ऑफ कोर्स ये कोई 8 पॉइंट वाली जागरेब, एक्चुअली जीडी भी इतना है कि निकाल सकते हैं लोग. सो वही वाली बात है यार. ब्रूज के लिए ऐसी बात नहीं है कि दे जस्ट हैव टू विन. जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है.
Yeah, if City win, they will qualify. That is true. I think the only scenario, is there a scenario where if City win, they don't qualify? If they win, they come on 11. If Stuttgart win 13, Sporting win 13, they will lose to 11. Sorry, 10, draw 11. But GD के मामले में I think City will be fine then. Yeah, so City just has to win. There is no scenario I think where if City don't win, they don't qualify. I think matlab has to be a catastrophic scenario somewhere else then. It's do or die. Yeah. It's a do or die scenario in a way. Like I don't think some of these teams जो अभी top 8 में हैं, like I don't think Atalanta will mind if they're in the top 24. I don't think Milan will mind if they're in the top 24. Atleti again will not mind. Of course, every one of these teams would love a break. Every one of these teams would love to have an extra week off. But I think apart from Liverpool, Barcelona, and surprisingly Arsenal, none of us have, like apart from us three, किसी को worry करने की जरूरत नहीं है. Liverpool have gone 7 from 7. Yeah, they have a fantastic year. Barcelona have gone 6 from 7. उन्होंने इस run में they've beaten Bayern Munich also. I think they only lost to who? Monaco से हारे थे Barcelona, right? Yeah, Monaco से हारी थी Barcelona. So Barca have been fantastic as well. आर्सेनल हारी थी इंटर से, वो एक घटिया सी पेनल्टी मिल गई थी और अटलांटा से ड्रॉ हुआ था. इसमें हमने पीएसजी को हरा दिया, बाकी और कौन था, स्पोर्टिंग को हमने तहस नहस कर दिया था. सो आर्सेनल आल्सो हैव अ गुड कैंपेन राइट नाउ मैन. City loss and draw and they're out. Yeah, most likely that's going to be the situation. Yeah. Man City are very lucky as PSG are playing Stuttgart. Yeah, वो एक sort of scheduling थोड़ी सी help कर देता है. अगर Stuttgart and PSG different opponents को खेल रहे होते, then if both of PSG and Stuttgart would have won, then थोड़ा सा चीजें dicey हो सकती थी. But because of the scheduling, one or both of PSG and Stuttgart will drop points. Um, कल साइट पे फॉर्मेट देखा, कल ही साइट पे फॉर्मेट देखा. अच्छा सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है. सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है. दक्ष भाई, बट विल द यूसीएल फिफ्थ स्पॉट बी फॉर द पीएल फॉर द यूसीएल क्वालिफिकेशन अफेक्टेड बाय सिटी ड्रॉ लूज? या, सो सिटी ड्रॉ लूज दैट मींस इंग्लैंड से देयर विल बी, so let's see, let's take a scenario where City draw or lose. Okay, if City draw or lose, England say there will be 1, 2, 3 teams from England: Villa, Arsenal, and Liverpool. And one of them has to go really, really deep into the tournament. From Spain, it will be 1, 2, Atleti, Barca, Madrid. That's it. 3 teams. Where's the fourth team? Girona. Girona will be out. So 3 from Spain, 3 from England. Italy say 1, 2, 3, 4 from Italy. Bologna will be out. So 4 out of 5. Um, फ्रांस से पीएसजी, ब्रेस्ट, लील, और कोई है? पीएसजी, ब्रेस्ट, लील, मोनाको. सो 4 from फ्रांस. या दोस्त, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हर एक कंट्री से 4 टीम्स चलेंगी एंड 4 टीम्स हैं ऊपर, तो मतलब निकलने के ज्यादा चांसेस होंगे. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राउंड ऑफ 16 में यू कैन प्ले अगेंस्ट योर सेम टीम. सो मान लो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आफ्टर द प्ले ऑफ ड्रॉ आर्सेनल हैव टू प्ले एस्टन विला या लिवरपूल हैव टू प्ले एस्टन विला, then you're basically killing your own coefficient in that way. Yeah. So we need all the English teams to go through, and we need all the English teams to at least make the quarters of the Champions League. I think Chelsea will do its business in the conference. They'll win the Conference League. यूरोपा लीग में you have to wait and see if United and Spurs कितना deep जाते हैं. दोनों look in some sort of a crisis right now, but यूरोपा लीग टेबल में both are fine, I think. So yeah, I mean, we would need Conference League ki teams, Chelsea to win it. We will need one of Spurs or United to be at least the semi or finalist, and we will need all of our English teams to be at least in the quarters. At least in the quarters. Um, so yeah, that's the situation, dost, for us to get that fifth spot in the Champions League. Baba, where is Baba? भाई रात को फ्री हो तो बताना, फीफा खेलेंगे. ठीक है बाबा, मैं बताता हूँ. मोस्ट लाइकली इस स्ट्रीम के बाद
पैक्स खोलूंगा मैं अपने आज, टीम ऑफ द ईयर वाले, उसके बाद हम लोग खेल सकते हैं. Yeah. So essentially, the point is this, chat. Ki we will genuinely need um, all the English teams to pull their weight. Yeah, all the English teams to pull their weight. Bergwall is much greater than Rice. बहुत ही बढ़िया भाई. दक्ष भाई, ये नया नॉकआउट फॉर्मेट कुछ समझ नहीं आया. आ रहा, चलो. We will talk about this. Let's talk about some other games. Yeah. Let's wrap up this UCL review and then we'll do a fun exercise. Cool. Uh, रुको. Where is this? Arsenal versus Zagreb. Now I'll tell you one thing here. Let me spend some time talking about Arsenal. कल आर्सेनल की एक अच्छी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी. आई एम अगेन लेकिन टेलिंग यू, द वे वी आर राइट नाउ, द वे आर्सेनल इज राइट नाउ, इट इज नॉट सस्टेनेबल. वी आर, लुक एट द स्टार्ट्स ऑफ दिस गेम. ठीक है, Arsenal had 17 shots, so shots are not the issue. Bayern had 30, they had 6 on target. We had 17, 4 on target, so the ratio is fine. It's 1:4. Bayern was 1:5, so we are okay. The problem is that I feel we made some mistakes in this game, जो अगर हम प्रीमियर लीग में करेंगे हम पनिश हो जाएंगे. We had a lot of possession. We had double the number of passes. Our passing accuracy was fine. We had like 11 corners, which we did not convert even a single one. We should have. ओपन प्ले से 3 गोल्स करे. डेक्लन राइस का पहले मिनट में गोल आ गया. आई थिंक दैट हेल्प्ड मैसिवली. अगर डेक्लिन का गोल जल्दी नहीं आता तो हम बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रेशर में होते टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. डिसेंट गोल फ्रॉम हैवर्ट्स एज वेल यार. अच्छा सा क्रॉस था मार्टिनेली का. ग्रेट हैवर्ट्स का हेडर. एंड वो 2-0 हो गया था. आई वाज लाइक ठीक है निकल गया. ओडेगार्ड फाइनली गॉट हिज गोल. First non-penalty goal of the season. Very happy for him as well. But in the bigger scheme of things, what Arsenal are doing is not sustainable. आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ. ये हम हर 3 दिन में इसका हमें एविडेंस मिल रहा है कि अटैक इज नॉट सस्टेनेबल, चांस क्रिएशन इज नॉट सस्टेनेबल, जिस तरह से हमें इंजरीज हो रही है इज नॉट सस्टेनेबल. कल का अगर आपने आर्सेनल वाला गेम देखा था, गैब्रियल को जब पैर पे लात पड़ी थी ना, जब उसकी नी ट्विस्ट हो गई थी, मेरे फट गई थी भाई. बिकॉज इमेजिन यू ऑलरेडी मिसिंग सलीबा, यू माइट एंड अप मिसिंग गैब्रियल, और आपको लिटरली नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे आपको सिटी को खेलना है. So not only are we missing Saka, not only are we missing Saliba, कल की गेम में माइल्स लुइस स्केली वाला भी था. We're missing everyone. And धीरे धीरे करके भाई everyone is collapsing. And मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही है कि बोर्ड को, मैनेजमेंट को क्या नहीं दिख रहा है. अगर आप बैकअप्स को एक इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ मिनट्स खिलाओगे वो इंजर होंगे. उसकी वजह से बैकअप्स के बैकअप को खिलाना पड़ेगा, वो भी इंजर होंगे. हमारे लेफ्ट बैक पे Tomiyasu was injured. Calafiori was injured. Zinchenko, Tierney, Miles Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly को हमने मौके दिए. Miles Lewis Kelly इंजर हो गया. हम उसको हर 3 दिन में खिला रहे थे. He's gotten injured. अभी क्या उसका फाइनल है वो कल ही पता चलेगा. But he was not there even in the squad yesterday. कल आर्सेनल का स्क्वाड इतना थिन था, we could not even fill all the spots required for a Champions League bench. That is how dire the situation is. Every 3 days 4 अटैकर्स हमारे पास, उन चारों के बीच शफलिंग होती रहती है कि कौन 3 स्टार्ट करेंगे. या तो इट्स इधर हैवर्ट्स, ट्रॉसार्ड, मार्टिनेली, या हैवर्ट्स, ट्रॉसार्ड, स्टर्लिंग, या हैवर्ट्स, स्टर्लिंग, ट्रॉसार्ड, या फिर सॉरी हैवर्ट्स, मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड. एंड अब देखना लास्ट कल वाली गेम में इट वाज मार्टिनेली, स्टर्लिंग, हैवर्ट्स. नेक्स्ट वाली गेम में इट विल बी मार्टिनेली, हैवर्ट्स एंड ट्रॉसार्ड. उसकी अगली वाली जिरोना वाली गेम में इट विल बी सम अदर 3. तो ये सारी बकवासें जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैकअप्स एंड उसके बैकअप्स के बैकअप्स भी इंजर हो रहे हैं, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या होगा. ईथन वनरी केम ऑन यस्टरडे. भगवान का शुक्र है कि वो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आ गया, क्योंकि भाई कब तक हम राइट विंग पे स्टर्लिंग को खिलाएंगे भाई. आर्सेनल ने इन द लास्ट 5 मैचेस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 5 मैचेस, आर्सेनल में 2 अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस इन अ गेम. दैट इज हाउ बैड द सिचुएशन इज भाई. नॉर्थलैंड में बीमारी फैल रही है भाई. बीमारी क्या है यार, टांगे टूट रही है. एंड देखो, यूरियन टिम्बर शुड नॉट बी प्लेइंग सो मेनी मिनट्स. यूरियन टिम्बर केम फ्रॉम एन एसीएल इंजरी दोस्तों. जब सलीबा इंजर होता है तो टिम्बर सेंटर बैक फिल कर देगा. कोई और राइट बैक नहीं है तो टिम्बर ही खेलेगा. He's come back from an ACL. This is not the number of minutes an ACL returning player should be playing. Bhai, thankfully Ben White has started training again, so maybe in a week or two Ben White will be back. Maybe against City Ben White should be back.
And we need that, bhai, because Timber. When is the last game you remember Arsenal playing without Timber? Yeah, that's insane. I don't consider Sterling as an attacker anymore. He is diabolical. I think it's lost on nobody our parts how bad Sterling is. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप स्टर्लिंग को ना एज अ मिनट्स बफर यूज कर सकते हो। मतलब अगर स्टर्लिंग नहीं होता तो आपको मार्टिनली हावर्ड स्ट्रॉसार्ड को हर 3 दिन में खिलाना पड़ता, जबकि वो भी 60 मिनट 60 मिनट से ज़्यादा नहीं खिला पाते। उसके बाद आपको कोई बटलर हो या डेजी टाइप्स या साला जैसा बंदा लाना पड़ता। आर्सेनल आल्सो हैव अ प्लेयर कॉल्ड साला। सो it's just one of those things, man. Is Cunha coming to Arsenal? I don't think so, man. I don't think so. I don't think we're gonna sign an attacker. आज ही सॉरी कल रात को ही रिपोर्ट आई थी डेलॉयट की अबाउट आर्सेनल्स फाइनेंसेस, एंड फाइनेंशियली आर्सेनल हैव हैड द बिगेस्ट ग्रोथ आई थिंक इन ऑल द इंग्लिश क्लब्स। 10th लार्जेस्ट थे हम लास्ट ईयर, एंड इस साल की रिपोर्ट के हिसाब से वी आर 7th। we've overtaken Spurs, we've overtaken have we overtaken Liverpool? I think we've overtaken Liverpool, Chelsea, and Spurs. And I think only the two Manchester clubs are ahead of us in terms of revenue and in terms of financial growth. भाई वही वाली बात है यश भाई, होपफुली बेन वाइट जल्दी वापस आ जाए। ओनली वन गुड स्ट्राइकर इज व्हाट आर्सेनल वांट। दे शुड गो फॉर somebody like Isakson, who is a proven Isak, अच्छा you mean Isak, who is a proven। the problem is ना बसंत भाई, पहली बात आप कैसे हो बसंत भाई? लॉन्ग टाइम बसंत भाई, मैं आपको देख रहा था। बसंत भाई आप मेरे को दिख जाते हो ना, मुझे चीजें याद आ जाती हैं। मैं देख रहा था बसंत भाई, आपने मेरी वीडियो पे भी कमेंट किया, आपने मोहक की। आप देखो एक बात बताओ बसंत भाई, आपने मोहक की वीडियो पे जाके ये क्यों बोला कि दक्ष इज क्राई बेबी? आप मेरी वीडियो पे बोलो ना, मेरी मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो मोहक की वीडियो पे? हैं? एंड आई एम वेरी हैप्पी आज आप आ गए, कंसिडरिंग दैट सिटी लॉस। विल टॉक अबाउट दैट गेम एज वेल। भाई वुल्स किस बात का 80 मिलियन मांग रही है? दे आई थिंक इट विल बी 60 मिलियन, and they're asking for that money for two reasons. One, they themselves paid 50 million for Matheus Cunha, and two, he is so important for them, especially in January, considering they're trying to escape relegation. They don't want to sell. Now imagine कि हम टाइटल में फर्स्ट पे होते हैं अभी, ठीक है, हम टाइटल रेस है, हम लिवरपूल की पोजीशन पे हैं, हम 6-9 पॉइंट आगे हैं, वट एवर इट इज, एंड सडनली रियल मैड्रिड आती है और बोलती है कि भाई गिव अस बुकायो साका और गिव अस विलियम सलीबा। एंड यू वुड बी लाइक भाई अगर तुम्हें अभी चाहिए, जब हमारी टाइटल रेस है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज एट स्टेक, तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस देने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब बहुत ज्यादा ओवर पे करने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम इतने डेस्परेट हो। एंड दैट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स। सो Wolves have purchased Cunha from Atletico for 50, and they obviously want a profit on him. Cunha I think 3 साल पहले आया, 2 साल पहले आया if I'm not mistaken, so it's not been that long, and they want to make profit on him. That's simple as that. We all know Cunha is not worth 45 50 million maybe max, but this is not a subsidy. This is about how much a player is worth to a team, right? So for example, if Wolves were stacked with strikers, Cunha is not that worth because they have too many strikers. But now he is their main piece. आप उनके main piece की तरफ चले गए। आप मांगो Wolves से उनका कोई और लमीना वमीना टाइप्स मांग लो, बोल दो हमें मारियो लमीना दे दो भाई, दे देंगे आपको मारियो लमीना वो 15 मिलियन में। बट डू यू वांट मारियो लमीना? नहीं ना। तो ही वाली बात है। What is the solution according to you, Daksh bhai? Because you can't give injuries excuse every time. Where is squad planning? Who is responsible? Your single spark. Completely understand why you can't give injuries as an excuse every time. What I am saying is that in the last 2-3 years, whenever a club has suffered massive injuries, बहुत ज़्यादा injuries, वो ना ultimately decline करते हैं पॉइंट्स पे, पोजीशंस पे, विंस पे, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पॉच वाली चेल्सी में जब हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई इंजर हो रहा था, पॉच की चेल्सी गिर गई थी 10th 11th पे। सेम हैपेंड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हेन लास्ट सीजन every week somebody got injured, they fell down a lot. न्यूकासल लास्ट सीजन had zero, पता क्या उनके कीपर भी इंजर हो रहे थे भाई 2-3, they fell down a lot. The thing is this, the squad planning is terrible in terms of not having an attacker, in terms of not having a dynamic chance creating midfielder. You can complete, I am, मैं आपका full हाथ आपके साथ हाथ मिलाता हूँ that these are the things
that we should have planned for better. But आप ये सोचो, with injuries to Saka, who I think we can all agree is Arsenal's best player, with injuries to Saliba and suspensions multiple times this season, uh, essentially everyone except from Trossard and Kivior have been injured this season. At some point or another, for at least 1 to 2 weeks, everyone has been injured except अगर आपका नाम लियांड्रो ट्रॉसर्ड और याकूब केवियर और डेविड राया है, ठीक है, इन तीन के हिसाब से अलावा ओडगार्ड इंटरनेशनल ब्रेक में इंजर हो गया, साका फिर इंजर हो गया, सलीबा भी इंजर हो गया, राइट बैक्स नहीं है, एक ही राइट बैक है जो पूरे सीजन खेल रहा है, जैसे लिवरपूल का ग्रेवेनबर्च एक ही डीएम है, हमारे पास एक ही राइट बैक है, ठीक है, सेम विद लेफ्ट बैक एक 17 साल का लड़का है. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस सेटबैक, इफ द वर्स्ट थिंग दैट यू हैव डन is be joint second on points above on GD with Forest, who've had basically no injuries. Um, until about I would say 3 weeks ago, you were being like, okay, हम शायद से अभी भी टाइटल के साथ शॉर्ट पे हैं, maybe you know, you never really know. So I don't think it's a fall as bad as others have done. In fact, this is what happens when you have squad depth, especially in defense. हमारी डिफेंसिव इंजरीज बहुत ज्यादा हैं, बट डिस्पाइट दैट हमारा डिफेंसिव रिकॉर्ड इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट. वी आर नॉट क्रम्बलिंग डाउन. अगर आर्सेनल अभी 8th 9th पे होती, मैं बोलता सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सिंगल स्पार्क भाई, कि स्क्वाड की प्लानिंग बिल्कुल बेकार है. बट द सोल्यूशन इज दिस, यू हैव टू ट्रिम द स्क्वाड. जैसे अभी जिनचेंको की जाने की बात हो रही है, ठीक है, जिनचेंको माइट लीव, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. You have to get rid. Jorginho will leave, Partey will leave, maybe Trossard will also leave. You have to rebalance the squad with attackers. You have to fill them with good depth. Zubimendi अगर आ जाता है, good first step to replace Jorginho and Partey. If you're getting one of those other younger kids, I forget his name, Sver Naipan, another great talent for the future. उसको आप लोन आउट भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो. अकेडमी को आप इंटीग्रेट अच्छे से कर रहे हो. इस सीजन आई थिंक 8 academy talents have gotten their debut this season, either through injury or circumstances or by choice. ठीक है, 8 academy talents. And so in terms of rebuilding the squad, आप इंजरी प्रोन प्लेयर्स को भेजो. हम हेसूस को भी बेच देते, बट उसकी एसीएल हो गई अनफॉर्चुनेटली. ट्रॉसार्ड को आप मोस्ट लाइकली मूव ऑन करोगे, कीवियर को मोस्ट लाइकली मूव ऑन करोगे, टॉमियासु जिंचेंको में से एक दो तो जाएंगे, कीरन टियरनी चला जाएगा. So you're losing 3 defenders, you're losing 2 midfielders, you will also need another goalkeeper to replace your lone keeper. You have to rebuild the squad in a much more balanced way. यार मेरे हिसाब से I can't give you a definitive answer यार दोस्त, but टॉप 8 के लिए अगर आपको सिक्योर करना है, आई वुड से 12 पॉइंट्स नहीं, 14 points should be more than enough. I think 14 points should be more than enough to secure top 8. GD of course matter करेगा. We have been horrible in the transfer window. City got Marmoush, PSG got Quara. We should have gotten for both. I think I agree. In terms of transfer fees, Ishan, we should have gone for Quara, definitely for Quara. For Marmoush, the situation's a bit dicey because you're paying 74 million for him, which again is something we can pay. I think the problem is the wages. It's that City are paying him 300k plus. अगर 300k प्लस देना होता, हम निको विलियम्स ले लेते. उसका रिलीज क्लॉज तो 50 मिलियन है, उसको 50 मिलियन उसको दो और 300 के उसको दो. बट आई थिंक रिलक्टेंस यही आती है कि क्या आप 300 के मारमूश को देना चाहते हो. नहीं, आप ये सोचो, मेरे हिसाब से हालैंड एंड मारमूश एज अ डुओ इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट लीथल पेयरिंग्स इन द प्रीमियर लीग फॉर इयर्स टू कम. But the caveat is that City will basically be paying them, considering Haaland ka new improved contract, approximately 1 million a week. Now, can we do that with Havertz on 300k aspas and maybe Marmoush on another 300k aspas? I don't think so. 600k per week is still something which is beyond our capabilities right now. Okay, 16 with healthy GD, I think 14 with healthy GD is fine. Cunha, I think उसको release clause डाल देंगे उसके contract में आयान, and I don't think Cunha will leave. Although shout out to Forest for showing ambition and trying to sign Cunha, man. Anyway, so for Arsenal, we need to do one thing, which is rebuild the squad in a much more balanced manner. We also have to rebuild the squad with the right age profiles. कुछ लोग old हो रहे हैं,
आई एम नॉट सेइंग इनको लाइक अभी हलाल वलाल कर दो टाइप्स, मतलब गैब्रियल 27 हो गया तो खत्म। नहीं 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 नहीं, but you have to start keeping in the mind it's now slowly time to start getting replacements. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ जिंचेंको एंड टियर्नी लीव एंड टोमियासु को हम बोलते एक और साल है तेरे पास, बस मतलब खत्म, इसके बाद पूरा आज नहीं करा। अम, ठीक है, अगर हम टोमियासु को रख लेते हैं कि तू बाकी सबका बैकअप है, बेन वाइट टिम्बर है, कैलाफ्योरी है 22 साल का लड़का, और उसके बाद बिकॉज जिंचेंको एंड टियर्नी को लेट्स से वी गेट समबडी लाइक जोरेल हाटो, ठीक है, दैट इज अ ग्रेट यंग डिफेंसिव लाइन जिसका आपका ओल्डेस्ट बंदा इन दैट डिफेंसिव लाइन इज 27 years old. A 27-year-old defender being your oldest, and considering it's Gabriel, somebody with a lot of experience as well, it's great reconstruction of defense. If you're replacing 30 plus year old Partey and 35-year-old Jorginho with a 25-26-year-old Zubimendi, and आपका midfield is basically 25 or 26-year-old Rice, a 28-29-year-old Merino, Zubimendi, Odegaard, Nwaneri, maybe Miles Lewis Kelly in the future. That's a great midfield reconstruction. It's just about the attack now. It's just about the attack now. अगर आप हैवर्ट्स को रख रहे हो, ट्रॉसार्ड को रख रहे हो, साका को रखोगे, मार्टिनेली को रखोगे, just need two more attackers, man. 6 attackers and you're set. बस एक गोलकीपर चाहिए, गोलकीपर का आई डोंट नो व्हाट विल डू. Chunchunge Lunga says Havertz 14 goals in 30 games this season, 14 goals, 51 appearances last season. Trust my number, G. Acha, 14 and 51 was last season. This season is 14 and 30. See, here's the thing. In the broad terms, Havertz's numbers are not bad at all. I really like these numbers. But the problem is this. The problem has never been, does Havertz score enough goals? The problem is, when we need Havertz the most, will he score a goal? For example, against Manchester United, we needed goals. Could he have scored? Yeah, of course. That number would have inflated by 3, 4 more. Agar United के against chances ले लेता. That's the difference, man. We don't need somebody who just gets the numbers, which is why I don't agree with this Twitter pe no new thing. His best thing is that he can get into those positions to score those chances. Of course, but that can. I'm sure he is intelligent in his movement. I'm sure he's intelligent in creating opportunities. We need somebody to finish these opportunities, man. What makes Bukayo Saka our best player? It's because he fashions those chances to score goals and he ends up scoring those goals also. ठीक है, तो वही वाली बात है कि हैवर्ट्स के नंबर्स अच्छे हैं, बट जब क्रूशल मोमेंट पे जरूरत पड़ेगी, मान लो अब हम नेक्स्ट राउंड पे जिस तरह से अपेरेंटली सुपर कंप्यूटर मॉडल्स आ रहे हैं, लेट्स से नेक्स्ट राउंड वी एंड अप मीटिंग रियल मैड्रिड अगेन. आपको पता है रियल मैड्रिड कितनी रूथलेस एंड एफिशिएंट है. लेट्स से by some stroke of genius we end up getting a 0-0 at the Bernabeu, and Emirates पे we have one chance for Havertz to score. He's through one on one. मैं आपको एक बात बताऊं, जब हालैंड जाता है ना वन ऑन वन, मैं बोलता हूँ गोल. When Salah is one on one, I'm like गोल हो गया. When Havertz is one on one, I am not sure. I'm like please कर दे. Like it's more of hope. You know, कुछ killer लोग होते हैं, when they're through on goal, you're like it's a goal now. अब तो आए गया गोल. या फिर ऑली वॉटकिंस भी चले जाते, you're like it's a goal now. And that's the problem. That sort of confidence that your striker is going to bury the chance at the back of the net. वो confidence Havertz नहीं दे रहा है. Havertz will put enough balls at the back of the net, but will he do it, especially when we need him the most, is the biggest question मेरे हिसाब से. Would you like to see Zishan stream with Kuldeep Bhai? He said about Arsenal some interesting points. I'll watch Single Spark. Thank you so much, yaar. Who Kuldeep Bhai said or Zishan? Zishan though I know. Zishan analyzes Arsenal really really well. I think Zishan is one of those creators who is a non-Arsenal fan or maybe has a soft spot for Arsenal, but he analyzes Arsenal really, really, really well. बाकी सब they try, of course. मैं भी चेल्सी का कुछ नहीं अच्छा बोल पाता, या यूनाइटेड का और बारसा और रियल for that matter, which is why whenever I do want to talk about it, like tomorrow I want to talk about Chelsea, I'll ask Babar to come on stream. बट मैं उतना नहीं बोल पाता, मैं आउटसाइडर व्यू देता हूँ. आई थिंक जीशान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो अच्छे से दे देते हैं. चौंकी भी, यश भी, बट आई थिंक जीशान इज द बेस्ट नॉन आर्सेनल क्रिएटर हु टॉक्स अबाउट आर्सेनल. That's what Arsenal has been saying. One more young CM attacker, isn't it? One marquee signing and attack is all you need to the next level. And मैं वही कह रहा हूँ यार. देखो, आज तो पक्का हो गया based on yesterday's reports that Arsenal have zero money issues. हमारा revenue is the third best in England.
हमारी wages is the best ratio in England. Liverpool are at 63% wage ratio. Aston Villa are at 90% wage ratio. United are at 70. Chelsea कब ठीक हो गया wage ratio. But हमारा best है in terms of revenue to wages. हमारी wages increase करी but it's still 50%. So we have a lot of wiggle room, which just begs the question: when will you pull the trigger and who will you pull the trigger on? Can you put 130 million on the table if Newcastle के पास आप जाते हो बोलते हो Isak and they say 130 and you're like fine, let's structure the deal. Can you do it or not? That is the biggest question, man. जैसे राफा के लिए भी जा रहे थे बट वही वाली बात है, हम हमेशा 4-5 मिलियन शॉर्ट पड़ जाते हैं यार, ये वाला इशू है. यश ग्लेजेस हैव इट सो मच. आई थिंक वही वाली बात है. देखो, when you analyze football there is going to be a very फेस वैल्यू एनालिसिस ऑफ थिंग्स. कैसे चल रहा है, आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही है, ऑफ कोर्स आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही है, सबको पता है. मैं खुद आपको कहता हूँ ये अटैक सस्टेनेबल नहीं है, ये डिफेंस बहुत लीक कर रहा है, स्क्वाड प्लानिंग में इश्यूज हैं. दिस इज वेरी फेस वैल्यू एनालिसिस. बट देन व्हेन यू गो इनटू द डीपर इश्यूज कि लाइक ओके इज इट बिकॉज दिस पार्ट ऑफ दिस प्लेयर्स थिंग इज बीइंग एक्सपोज्ड और व्हाटएवर स्टफ लाइक दैट that's where it becomes. Havertz is one guy who you see on the stat sheet, you're like, you can be either ways. You can be like बहुत टट्टी player है and other times you'll be like बहुत अच्छा player. It's like Nunes. Nunes is what, 60 GA in like 100 appearances or something, which is a fantastic outplay, man. इतना तो मतलब बहुत सारे प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के पास नहीं है जितने इससे. नूनेस जितने महंगे, नूनेस से ज्यादा महंगे वाले. प्रॉब्लम इज दैट नॉट दैट. नूनेस इज अ एक्सजी मैग्नेट, हम कहते हैं नूनेस इज एन एक्सजी मैग्नेट, बट सो इज रफीनिया. एंड रफीनिया नूनेस के बीच में एक ही डिफरेंस है, लिथैलिटी एंड आईक्यू. रफीनिया की जो आईक्यू एंड लिथैलिटी है, बाय गॉड, माइल्स क्लियर. दैट्स द थिंग. Vlahovic, yeah, Srijan, the thing is, Vlahovic, in terms of chance creation and chance conversion, is worse than Havertz. And if you're going to get somebody on loan who is worse than Havertz, जिसको अगर आप Havertz को wasteful कहते हो, Dusan Vlahovic is apparently the definition of wastefulness. I don't think so, man. I don't think so. You hit the point regarding face value analysis. It is in many match review videos, and I think Karan, I don't blame people for. Um, of course, I also do face value analysis in some of my reviews as well, because that is the easiest way to consume content. You don't have to think too much. It doesn't require visual aid. Also, a lot of people I know listen to YouTube videos while they're working out, while they're doing something. Don't even look at the visual cues or editing and stuff like that. For them it's just about narratives, and that's fine. That's how most people actually consume content. So if they consume content like that, they will make content like that. Dheere dheere though, I think there is a small shift towards storytelling, which I really like. Muktesh, Chonky, they're doing really good storytelling videos. Baba himself, they do really really good storytelling videos. But some people just want a relaxed conversation about ye team ne to acha kara. Like they want to hear a conversation between friends, or they want to hear just simple content. So it's completely okay. Isak to Arsenal will be the best signing ever for Arsenal, says Mohammad Qayyum. देखते हैं यार. Yes, of course. I think everyone and then Nani also knows that Isak to Arsenal is the best. But will it happen is another question. All right, we've spoken about Arsenal for a long time, yeah. What other matches were there this week? Madrid versus Salzburg. I'll be honest. भाई हाथ खड़ा करो if you were one of those people who were basically saying अम्बापे लेके वेस्ट कर दिया मैड्रिड ने. भरत says, I believe Sesko is good. जितने उसकी हाइप है उतना भी अच्छा प्लेयर नहीं है. I seen him missing goals when it matters. Personally, think Gyökeres and his brutality be much more better than Sesko. देखो भरत, the thing is this: no striker is going to be perfect. ये तो मैं खुद मान के चल रहा हूँ. Gyökeres will have his own limitations. कि yes, when you have the chances to run in behind, Gyökeres is fantastic, which makes him fantastic for a team like West Ham or even United. United जो पीछे बैठ के attacks absorb करेगी and then they'll counter. Gyökeres is perfect because he'll have space to run. आपने आर्सेनल के अगेंस्ट देखे कितना लो ब्लॉक वगैरह होता है, राइट? कितना लो ब्लॉक है, कितना ये है, कितना वो है. एंड सो वही वाली बात है दोस्त कि लाइक ग्योकरेस के अगेंस्ट आप लो ब्लॉक बिठा दोगे, ग्योकरेस कुछ नहीं करेगा. सेस्को के अगेंस्ट आप कुछ चांसेस दोगे, he'll miss some chances. सेम विद व्लाहोविच.
Same with Cunha, ki he's not really a number 9, he's not really a winger, he's more of like a 10 or a second striker. Okay. So you want to go for Cunha and spend 70 million on him also, let's say, brother, then you're getting another second striker for 70 million. एक 60, दूसरा 70, फिर क्या ही हो गया? मतलब खुजली इच करने के लिए अगर आप कुनिया लेने तो वो अलग ही बात है. Same with Osimhen. He'll finish chances sometimes, but if you look at his shot conversion this season, has been horrible. Then his off-field attitude issues. So it's the question is this: आप कौन सा पर्क एंड आप कौन सा नर्फ लेना चाहते हो? What buff and nerf do you want to take? ठीक है. So let's see, man. I mean, it's all about which evil or sorry, which drawback do you want to take in a player. Spectre, thanks so much for the contribution. Would you want Rafinha at Arsenal next season? I wanted Rafinha at Arsenal in 2022 when he was available from Leeds. So the story goes like this: he was available for around 55 million. Arsenal bid 50 million, which David Ornstein reported, but Leeds rejected that. Then Chelsea overtook Arsenal in signing Rafinha, and they actually bid the 55 million. And they were apparently getting close to signing Rafinha. But Deco, who was Rafinha's agent, moved to Barcelona as the director of football, and he bought Rafinha with him to Barcelona. And I think he loves Barcelona way too much to leave Barca. I think the only breaking point where Rafinha could have been sold if it was Javi still in management and Rafinha was being used as a left winger. See, the only issue has always been with Rafinha, like he prefers playing on the right, but they also have Lamine Yamal. But his management and usage has been so good. He plays still on the right. He will cut inside and play as a 10 and play on the left also, and sometimes play striker also. And what really cemented my idea that Rafinha is going to stay at Barcelona um, is when all those photoshops were being made now of Nico Williams ki number 11 jersey. Rafinha was like, haha, that's never going to happen. And so yeah, I think Rafinha to Barca is never like he's never gonna leave Barcelona. So yeah, I wouldn't even dream of it anymore, to be honest. That is Barcelona, true. Arteta can stable Arsenal, but for trophy they need new managers. Arteta didn't go for kill in many matches like last year Aston Villa. Some risks were needed. See, respect to Kuldeep Bhai for speaking out on Arsenal, but I think there is no guarantee in football that you change managers and you will get over the line. Sometimes it works out, sometimes it doesn't work out. I'll make a video on this. We'll make a video on project managers and we'll talk about Arteta, we'll talk about Ange, we'll talk about Ten Hag Amorim, and we'll talk about Maresca. We'll make a nice longish sort of mini documentary on project managers. And we'll discuss how all projects are actually not the same and every outcome is actually not the same. We'll talk about it this way. Um, Against Aston Villa, I think I'll say to everyone, rewatch that game last season, Aston Villa जब Arsenal हारी थी. See the chance that Trossard made. See the chances we actually had, and we could have just basically won that game, but we just didn't. So the risks were there, yeah. In fact, one of the reasons we considered was because we committed too many people forward. But कोई बात नहीं. Okay. Real Madrid versus Salzburg. Bhai, in short, everyone who said that Mbappe is a waste, Mbappe is going to ruin Madrid. This should have been just Vinicius's team and Jude's team and Rodrigo's team. And Mbappe ने आके dynamics खराब कर दिए. Here is the thing. Arsene Wenger said a very nice thing, which I will always agree with. He said, when a player joins a club, a player has to adapt to that club's identity. ठीक है? They have to adapt, fit देखना पड़ता है, like if you're going to buy a striker or a forward who's great at counter attacking, but you're going to put him in a team which dominates possession, then that player has to adjust to the possession identity. He can't just keep playing counter attack all the time. But he said there's one player in the world that will walk into any team and he doesn't have to change. And his name is Kylian Mbappe. And that is the reality of it. Bhai. That is the reality. Kylian Mbappe is for a reason. He was called the next greatest thing after रोनाल्डो मेसी नेमार वाला जो भी एरा था, ये बंदा फ्यूचर में ले जाएगा फुटबॉल को. I can understand that a player when he gets to a new team, it's gonna take some time for him to get used to it, whether it's the refereeing, teammates, opposition, सब कुछ. um
For you, it's again for you guys, it's Saka which you're missing the most. Yeah, exactly. Yeah, Karan, I'll start this. I'll address this one at the end. Um, and so Mbappe is that player who I am so sorry, but he goes to any team and that team is better. Even if you're a Madrid, even if you're a Barcelona, even if you're a Bayern, even if you're the goated team of all time, you add Mbappe and he makes you better. He'll take time. He'll take time. He signed a 5-year contract. He signed it in June and we are in January right now. It is 6 months approximately since he signed, and 6 months out of 5 year is nothing when it comes to gelling or acclimatizing, adapting. लोगों का आई थिंक हालैंड की वजह से परसेप्शन इतना खराब हो गया है, या फिर काफी सारे प्लेयर्स की वजह से परसेप्शन इतना खराब हो गया है कि लोग सोचते हैं अभी आएगा और वो मचा देगा. It's the same thing which will happen in Marmoush also, where Marmoush will take time. It's not the Bundesliga, although it's a lot more transitional. And City is a team which plays very slowly. And you will see Marmoush not actually do a lot maybe in the initial periods. Maybe it does, maybe it doesn't. My feeling is he's going to take time to adapt. But he is so, so good. He is so, so good, Yaar Mbappe. The guy has won a World Cup, could have won a second World Cup before he turns 25. That's how good he is, yeah. He is. मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, अंबापे की ग्रेटनेस की, ना, it's not a purple patch. Players like Mbappe have a bad run of form, but they're permanently class. Spectre became a member as well. Spectre, thank you so much for joining a membership. You joined Youth Academy. So go to the members only community tab, click on the Discord link, join the Discord, link your YouTube account, and find yourself some really good and cool people, man. Really cool people. Salzburg है वो chill. आप कुछ भी टीम का नाम ले लो यार. You put Salzburg, you put who do you want to put? You'll put कभी लास पाल्मास ले लोगे, कभी कोई और ले लोगे, एंड धीरे 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 कीप प्रूविंग यू रॉन्ग. देखो मैं एक बात बताऊं, फ्रांस जैसी कंट्री वेयर देव हैड प्लेटिनी, वेयर देव हैड जिडान, वेयर देव ऑनरी, ठीक है, बहुत बहुत आइकॉनिक प्लेयर्स रहे हैं फ्रांस में. अगर फ्रांस अपनी पूरी कंट्री की होप्स व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एक सब 30 ईयर ओल्ड लड़के पे डाल देते हैं, दैट इज अ ह्यूज थिंग. फ्रांस कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि ये पहला सुपरस्टार इमर्ज कर रहा है. फ्रांस हैज अ लॉन्ग लेगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स. अगर उस सब नॉलेज एंड हिस्ट्री के बावजूद, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्चुगल में जाओगे एंड अब आप पोर्चुगल में पूछोगे हु इज द ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज प्लेयर एवर, इट विल बी अ स्प्लिट. इट विल बी अ स्प्लिट बिटवीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड यूसेबियो. आप चेक कर लेना, देयर बीन प्लेंटी ऑफ सर्विस जो गोल वोल ने सबने करी हुई है. बट विद अम्बापे ना, with France, people will say Zidane, people will say Platini, people will say Henry maybe, but जो स्विंग हो रहा है ना, अम्बापे 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 अम्बापे, बिकॉज ही इज अ पैरिसियन, कैपिटल में बॉर्न हुआ है, इमिग्रेंट का लड़का है, ठीक है, बट ही रोज थ्रू द रैंक सो मच, पूरी कंट्री ने होप्स डाल दी इस पर. एंड दैट इज द मार्क ऑफ समबडी हु द पीपल ऑल्सो ट्रस्ट. Mbappe has more UCL goals than Henry. Yeah, for sure, for sure. Eusebio took them to World Cup semis or something like that. Eusebio was a huge icon for Portugal. I think he was one of the very first legends that put Portugal on the map. तो वही वाली बात है. Mbappe is an all-timer player. उसकी speed, उसकी dribbling, उसकी shot power. Everyone lacks at something. Mbappe की lacking is probably defensive effort and maybe even headers, but वो भी ज़्यादा नहीं. But जिस speed से Mbappe भागता है, जिस speed से वो directions change करता है, जिस speed से वो shots मारता है, oh my god, man. Oh my fucking god, dude. He is too good. And ये तो मैं सिर्फ अम्बापे को ग्लेज कर रहा हूँ. इसमें आप जूड की परफॉर्मेंस देखो भाई. What a midfielder, man. देखो, for me personally, I love Pedri. ठीक है, I call him Prince Pedri. I think he's a silky footballer. I love silky fucking footballers. ठीक है. Jude is just everything. Jude is like the amalgamation of a guy who will win the ball, a guy who will shoot the ball, a guy who will make those runs, a guy who will do the mazduri, a guy who will find the pass and everything. Juice Fontaine, 13 goals, nice. Griezmann is underrated, of course. Griezmann to underrated. Uh, but yeah, the point is this.
in that team where Mbappe is there, where Vinicius is there, where Jude is there, where Rodrigo is there, where now suddenly Ceballos is kicking on. How? मतलब क्या this? If you ask a Madrid fan and you ask them to rate this season, they'll tell you 6 on 10, and their 6 on 10 is their top of the La Liga. क्या ही बात कर सकते हैं यार उसकी. Let's not forget Rodrigo. Exactly, exactly. मैं वही कह रहा हूँ. देखो संकेत भाई, that's the only thing. The spotlight is so bright on Mbappe and Vinny and Jude that people often forget there's Rodrigo there as well. And maybe as fans, the fascination is to go for the shiny toy. Not to say Rodrigo is not a shiny toy, but if you have to have three attackers or four attackers with the clutch gene, you will make that front four of Vinny, Jude, Mbappe, and Rodrigo. Clutch genes भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के. इसमें फेडे, ठीक है, फेडे आप उसमें डाल दो, मॉडरिच आप उसमें डाल दो, रूडिगर आप उसमें डाल दो, टीबो आप उसमें डाल दो. क्या टीम क्रिएट करी यार उसने. बट I am telling you, the reason I bring up Mbappe is because I felt throughout the season he's gotten such unfair criticism that of course हम सब लोग बैठ के अपने घर पे पोटैटो चिप्स गिर रहे हैं, यहाँ पे ड्रूल गिर रही है, 2 दिन से नहाए नहीं हो, बट हम चिल्ला सकते हैं कि मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स हैं, उसको 1 महीने में बैलेंड और फेवरेट होना चाहिए था. You are going to get a world class player for at least 5 years if he doesn't extend, of course. वो तो और अलग बात है. ठीक है. लोग उसको एंचेलोटी को बोलते हैं कि ये बंदा सिर्फ चिंगम चबाता है और अपनी आईब्रोज ऐसे करता है, और लाइक डॉन कार्लो की क्या मतलब पावर ऑफ फ्रेंडशिप से हमें कोच कर देगा. भाई कार्लो एंचेलोटी सो मच स्मार्टर देन, अगेन दैट इज जस्ट फेस वैल्यू एनालिसिस. जो लोग कार्लो एंचेलोटी को ढंग से उसको टाइम नहीं देंगे समझने में, पढ़ने में, द रोल डेविड एंचेलोटी कितना करता है एंड एवरीथिंग, वो लोग यही सोचेंगे कि एंचेलोटी उनको बोल रहा है भागो. वो जैसे शॉन्डाइच वाला मीम देखा है, पुट स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग इन दैट एंड पुट इट इन दैट एंड. लोग सोचते हैं एंचेलोटी भी यही करता है. ठीक है. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट. One guy from Mumbai won't agree with you. Who won't agree with me? भाई अभी तो कुछ भी हो सकता है, लास्ट के डे पे पता चल जाएगा. वकार भाई, हाउ आर यू? How's the thing I sent you here? Did it all help and all? All this firepower only to Madrid get heavily favored by the refs in Spain. They don't even need it. And आप सोचो, ठीक है, despite all of this crazy attack, they still get spanked by 9 goals in 2 Clásicos, man. They still get spanked by 9 goals in 2 Clásicos, bro. And it could have been worse in the second leg. Bhai, it's so much fun, man. It's literally so much fun to watch Clásicos right now. It's so much fun to watch this Liga campaign because both teams can drop points to any random team, but एक दूसरे के साथ whenever they meet, man, it's absolutely nuts. Spectre says, stop milking Madrid. I'm a Barca fan. I think, I honestly tell you, of course, there is TCSB, of course, there's Divyansh and Yash and stuff like that. I genuinely think on this website in our community there is very little Madrid PR. I feel so. I feel there's a lot of Barca PR, and I don't mean like false tarif and everything. But I think there's a lot of Barca PR. I don't think there's enough Madrid PR on this website. Very few. Arush, how are you, brother? How are you? Nice to see you here. All right, before we do our experiment, I pinned one comment from Karan who says every team has that player. And yeah, for us, it's Saka. The fact we're going to miss him for 2 months in the most busiest time of the season, and we're still saying like we're second, and it can go bad, dude. But I'm happy with the effort that we've put in for the team till now. But hopefully Saka comes back. He's probably coming back in March. Okay, chat. I need your help now. I need your help badly. So this is a Champions League ka result simulator. This will show us who plays who if certain results happen. I'm gonna post the link. आप अपने आप खुद भी बाद में जाके इसको कर सकते हो. But we are going to predict match day 8 results, and then we're going to see what the table looks like, and then we're going to see round of 16
um, का क्या होता है. So I'm gonna ask you, like for example, I'm gonna say Sporting versus Bologna. Please don't just write 2-0, 3-0 because chat में delay इतना आता है मुझे नहीं पता आप 2-0, 3-0 इसके लिए कह रहे हो लिवरपूल वाली गेम के लिए कह रहे हो. So write the team name, who's gonna win or draw, and just write जैसे for example write Sporting 2-0 Bologna. Just write something like that. Write it in short. At least I know. So we're gonna predict match day 8. Then we're gonna see how it changes the table, and then we're gonna see how it looks in the round of 16. Okay, so first match of the next week, Sporting versus Bologna chat. What do you think? Is it gonna end up like? Don't just not the winner, but result because GD भी matter करेगा. So 2-0, 2-1, 3-1, whatever. I'm not saying कुछ popular vote होगा. I'm gonna see the most of it and I'm gonna take an aggregate. And really nice to hold hear that Yabaka. Sporting 2-1, 2-0, Sporting 2-1, 2-1, 2-2, 2-1. Okay. 1-0. 1-1. Sporting at home though. Bologna is ass chat. Bologna is 28 though. 4-1. And there's 2-2. Sporting को City के लिए अरे चुप करो City के लिए 3-1, 2-1, 1-1. All right, so most people are saying 2-1 or 3-1. I'm gonna go for a 2-1 thing. All right, let's go for a 2-1. I've seen a lot of 2-1s. PSV Liverpool chat. PSV Liverpool. Sporting shied after Amaring. That's true, man. They had such a great start here, Karan. Um, since then, they've just fallen off, man. People saying 2-0, 3-1. Yeah. 1-1. A couple of 1-1s. Couple of goals. We'll go for a sporting one in this one. 3-1 Liverpool. All right. Bologna end scoring. We'll just give them benefit of doubt. 2-0, 3-0, 4-1, 2-0. All right. 3-1. All right. So 3-1. Most people say it's going to be a 3-1 to Liverpool. I'll actually go for a 3-0, man. Let's go for a 3-0. Draw fully rotated Liverpool खेलेगा. I don't think it's going to be a draw. I am going to get Sport PSV one goal. Let's see. Does that change anything? It changes absolutely nothing. Okay. Young Boys versus Red Star. Young Boys versus Red Star. Ah. 2-1 Liverpool से संकेत. 3-1. Yeah, I think most people go for a Liverpool victory by a margin of 2 goals. So I think we got it good. People say 0-0. Ankur. 3-2 Young Boys. Young Boys right now are chat. Young Boys are 36. They're dead last, and Red Star are 32. So I don't really care about this, but I'm gonna go for a. This one I'm gonna do by myself. इसमें time waste करने की जरूरत है. I'm gonna go for a 2-1 Red Star. Stuttgart PSG. Now let's go. Stuttgart PSG. Stuttgart at home. PSG. याद रखो PSG ने कल कैसा खेला था. याद रखो that Stuttgart haven't lost a game in 9. I think they've lost 1 in 9. So they lost 1 in 9. So Stuttgart versus Paris. Stuttgart versus Paris. So I'm gonna go for a draw in this one actually. 3-2 PSG. Stuttgart 2-1. Stuttgart 2-1 PSG. 4-1 PSG. 2-1 PSG. PSG 2-0. 2-0 Stuttgart. Damn, इसके लिए poll करना पड़ेगा chat. Wait, let me create a poll for this. First, let's see what the chat thinks is gonna win. PSG versus Stuttgart. PSG W, Stutt W, or draw? Because I see winners, I don't see draws. Vote in the poll right now, and then once they based on the poll, we're gonna guess the result. Now everyone can contribute. Sath mein 400 people are here, but we haven't even reached 300 likes. So come on, chat. It doesn't feel nice to remind you all the time. Please like the stream, यार. It helps the channel grow. It helps me grow. 23.150 ऐसे कुछ हो गया. Let's try to get to 23.2 ASAP, chat. 23.2. Let's go. PSGW, most people say 2-1 Stuttgart, 2-1 PSG, 2-2 draw, 5-0, 1-0 PSG, 2-1 PSG. Damn. Okay. You hate the democracy.
See, I'll tell you one thing, Karan. I know everyone hates PSG though. I know everyone hates PSG, so I don't know what reason they'll have to vote for PSGW. 3-1 PSG, 2-2 draw, 4-1, 2-2. Oh man, I hear a lot of 2-2s. Okay, so let's do one thing. Based on the result, let's go for now a 2-1 or a 3-2. Let's go for a 3-2. Okay? Let's go for a 3-2 for now. Then we'll also move it down to a 2-2 and then we'll see. Oh my fucking god, look at this number, chat. If it's 3-2, PSG probably as of now end up on 10th. If it's 2-2, they end up on 20th. That's how crazy this game is. So for now, let's move to 3-2. Polling both scam. I understand the scams, man. I understand the scams. Polling booth scam. We'll keep moving PSG stuff. Don't worry. We'll move. Anyways, Strom versus Leipzig again doesn't really matter. I'll go for a 2-0 Leipzig one. City versus Bruges. अब आओ इस पे. City versus Bruges. Chat, what do you think? Pep Guardiola with Champions League on the line. Forget the Leipzig. Do the City Bruges. Do City Bruges. City 6-1 says ASP. Doesn't matter. Nil. What side is this? It's the UEFA side, brother. Here is the link. I'll post the link again. City 2-2 people saying 3-1, 5-0 City, 2-0 Bruges. Let me tell you one thing, okay? I know we all love City. At least PL fans love City. I'll tell you one thing. We'll try to do both results for this one. I'll go for a City one initially, but Bruges this season they have beaten Villa. They've beaten Juve also, if I'm not mistaken, and Bruges have beaten one more other team. Who have they beaten? Bruges. Uh, 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 uh. Bruges, 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 Bruges. Who have they beaten? Oh, they drew with Juve. Sorry, they drew with Juve. Um, fixtures. और किस किस को हराया उन्होंने? They've drawn with Celtic. They've drawn not a good team away from home, actually. All right, so for now, let's go for a 3-1. Let's go for a 3-1 City for now. Okay. We'll also simulate a draw. Don't worry. Bayern Slovan, I think they're gonna beat them, man. Slovan is ass. Inter Monaco, Inter Monaco. Yeah. But Bruges ain't a good team away from home, man. Karan, were you guys away from home to Bruges? Or were you at home at Villa Park? Inter Monaco. Inter 2-0? And Inter 1-0 ही करती है यार. Inter scores the minimum required to win and concedes as little as required to lose. So I'm going to go for a 1-0 Inter one again. Dortmund Shakhtar. People saying 1-0. Yeah, I'll go for a 1-0 Inter. Dortmund Shakhtar, chat. Yeah, I think so too, chat. Be very surprised if they do more. Be very surprised. Does this change much? Oh, it changes a lot for Monaco. Ooh. Ooh. Okay, let's go for a 1-0 for now. No new players can be registered or cup tied. Yeah, so no, in the same competition. So Europa to Champions League, it can happen. It doesn't happen. Dortmund 1-1 draw, 2-1. They have no manager as of now, right? Maybe by that time आ जाएगा कोई. 2-1 Dortmund, 2-2 Dortmund, 2-1, 2-2. Let's go for a 2-2 for now. Let's go for a 1-1. If they get a 2-1, that's fantastic for Dortmund actually. If they lose, oh my god. Let's go for a let's go for a 1-1 Dortmund for now. Barca Atalanta chat. Be honest. Don't put your Barca hats on. Don't put your Barca hats on. Be honest because it can affect the other team also. Okay. People saying Dortmund ko jita, so we're gonna make Dortmund win this one. Barca Atalanta.
देखो, अटलांटा बहुत अच्छी टीम है. 4-3 बारसा, 5-3 बारसा. It's at Barca's home. I'll tell you what I feel. मेरे हिसाब से it's gonna be a nil-nil. I think it's gonna be a nil-nil or a 2-0 to Barca. 3-2, 3-2, 2-2, 2-3. I have a feeling it's gonna be a nil-nil. मेरे को बड़ी स्टिंकी फीलिंग आ रही है. 3-1 Atalanta. Finally some Atalanta scores we also see. 2-1, 4-2, 6-0, 2-3, 2-2, 1-3. होम है, शायद जीत जाएंगे भाई. अटलांटा बहुत अच्छी टीम. मेरे को लग रहा है कि नील नील हो जाएगा यार. मेरे को फीलिंग आ रही है. 5-3. ओके, फॉर नाउ लेट्स गो 2-1 or 3-2. Let's go 3-2. Cool. Doesn't change much. Oh, Atlanta actually falls. Yeah, if they lose, yeah, if they win the top four, man, that's crazy. Let's go for a 2-1 for now. Leverkusen Sparta. I think no need, no need. Juve Benfica chat. Netflix Barca nil nil. Okay, okay. मुझे सिटी ब्रूश विल डू अ ड्रॉ ऑल्सो ऑन द सिटी ब्रूश, डोंट वरी. बारसा मैच कैनॉट फिनिश निल निल. ये मुझे भी लगता था. फिर ना मैंने अटलांटा का डिफेंस देखा था, बट हो सकता है निल निल तो नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. विल सिमुलेट अ ड्रॉ फॉर बारसा ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक दैट चेंजेस टू मच एक्सेप्ट फॉर मे बी अटलांटा. यूवे बेनफिका, आई विल गो फॉर अ निल निल because that's Juve. That's what they do. Actually, we'll go for a 1-1. Go for a 1-1 for now. Dinamo Milan 3-1. Consecao cooking. Salzburg Atleti 2-1. Actually, Atleti, yeah, man, they play really well. Lille Feyenoord chat. Help me with Lille Feyenoord, please. 4-4. Nah, nah. Juve draws, man. Juve draws. Juve draw. Draw Ventus, yes. I've gone for a nil-nil only. Help me with the Lille Feyenoord chat. Help me with Lille Feyenoord. Gasperini, great manager. True, true. Draw. Okay. See, this is a very interesting game. Huh? Both teams are in the shout for top 24. A 3-1 for Lille, a 4-1 for Lille, a 3-2 for Lille, a 3-1, 2-1, Feyenoord 3-2. Um, Salzburg ain't scoring. That's also true, actually. You're right. Yeah. Um, नहीं यार, I think nothing changes unless like Arsenal beat Girona like 5-6 nil or something. If you lose to Atlanta and Arsenal beat Girona like 5-6 nil, then we'll become second, you'll become third. ऐसे कुछ होगा. Um, 2-1 Feyenoord. Most people are saying Lille, man. So I'm gonna go 2-1 Lille. That's what the score I'm seeing the most. Okay, Villa Celtic at Villa Park. 2-1 Feyenoord. Now I'm seeing Feyenoord also. 3-1 Rotterdam. 1-1 or 1-0 Lille. It's a home game for Lille. Yeah, we've gone for a 2-1 in this one, those no. We've gone for a 2-1. Villa Celtic chat. What do you think? Oh yeah, yeah, you're right, you're right, you're right, you're right. Villa Magin Derby game 2-1 Villa win, says Karan. Alright, Karan starts us off. It's a good shout. Good shout, Harshan. बिल्कुल सही बोला. We'll see the table. We'll see the table and we'll keep moving some scores and देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं. Villa 1-0, 3-0, 2-1, 1-1, 1-1. I think Villa has this in the back, chat. I'm gonna go for a 2-0 Villa win actually. I'm gonna go for a 2-0 Villa win. Yeah, doesn't change. Oh, this changes a lot. This changes a lot. Anyways, I'll go for a 2-0 Villa win. Second last game, Girona Arsenal away from home with that attack. How is Girona? I haven't really caught up on Girona this season, chat. Girona kaisi hai? 1-0 Celtic, shut up. 1-0 Celtic. Celtic qualified anyways. Yeah, yeah, they're in the top 24 for sure. They're in the top 24 for sure.
हर मैच का पोल करेंगे तो दोस्त मैं 4 घंटे बैठा रहूँगा यार। कुछ-कुछ तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 3-0 Girona says Inferno, ओके। Girona will destroy Arsenal, mark my words, ओके। 1-3 to Arsenal, 1-1 draw, 1-0 Arsenal, uh, 0-2 Arsenal, 3-1 Arsenal, Girona 5-0, ओके। लेट्स डू अ पोल एंड अपनी बेइज़्ती करवा देते हैं बिकॉज़ मुझे पता है चैट कितनी हरामी है। लेट मी एंड दिस पोल। आर्सेनल वर्सेस जिरोना का पोल करते हैं। प्लीज आंसर ऑनेस्टली, हाँ। आर्सेनल वर्सेस जिरोना। आर्सेनल डब्ल्यू, जिरोना डब्ल्यू, ड्रॉ। Okay, let's do a poll for this one. Let's do a poll for this one. 3-1 आर्सेनल, जिरोना नॉट गुड इनफ, बोलोनिया ने 2 मार दिए थे, 1-0, 1-3। मेरे को लगता है करण we're gonna rotate super heavy यार against जिरोना। I don't think we're gonna play too many players. 7-0 तो नहीं होने वाला। 2-2 draw, 4-2, okay, 2-1 Arsenal. Girona lost the top players. They lost Dobvik. Who else did they lose? Dobvik था, Dobvik चला गया। Savinho चला गया, यान कूटो चला गया। Who else did they lose? अभी जिरोना है कहाँ पे? Girona is not bad. Oh, they're super bad in the table actually. Girona scrap. Arsenal attack is also poor. One. सही है भाई, दोनों टट्टी अटैक्स वाले खेलेंगे। Alright, let's see. Alright, good number of people say Arsenal W. So, what's the score? 3-2 max. Girona's not playing good. Alright, let's be super modest here. Let's say that they're just better than Zagreb. Let's go. Let's go for a 1-0 or 2-0. भाई हम कितने भी मार देंगे, अच्छा बारसा जीत जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। Let's go for a 2-0 Arsenal. Let's go for a 2-1 Arsenal. जिरोना भी कितने मार लेगी, बेस्ट केस सिनारियो 28th पे आएगी, कोई बात नहीं। Let's go for a 2-1 Arsenal. Let's give Girona some credit that our crappy defense and rotated squad के साथ they do something, but we are just slightly better. Yeah man, actually हमने इतने कम गोल्स खाए हैं ना इस कंपटीशन में, it's more likely to go 0-0 than it's likely to go anything else. Arsenal अगर ड्रॉ करती we can fall as low as 6th. Damn, crazy. Let's go 2-0 Arsenal. Madrid versus Stade Brestois, chat. Stoppable force versus movable object. Lol. 4-0 Real, says Ankit. Damn. 4-0 Real Madrid. 3-0 Madrid. Brest 3-0. 4-0 Real. 3-1 Madrid. 4-1 because we can't defend. Acha Sanket. Fairs. Or Brest win. Everyone loves Brest, the team, of course. Okay. So we'll simulate a Madrid win. We'll also simulate a draw. Okay? Brest is too. So a lot of people, because of PR, also are saying Madrid win. So let's go for a 3-1 Real Madrid win. All right. So after this is from the first round of simulated results. This is what the table looks like. Liverpool, they do an 8 on 8, 24 points. Barcelona second, Arsenal third. Inter fourth, Atleti fifth, Milan sixth, Leverkusen seventh, Villa make the top 8. Lille fall off, Dortmund fall off, Bayern and Real are 11th, 12th. Atlanta somehow difficult because they lost to Barcelona, also fall off. Into the top 24, Juve आ जाती है, Paris आ जाती है, Sporting आ जाती है. And chat, look at this, unseeded की वजह से City also make it into the playoffs because उन्होंने ब्रूज को हरा दिया, फायनॉर्ड, ब्रेस्ट वगैरह. Stuttgart because PSG beat them, misses out. Zagreb, Shakhtar, lucky, इन सबका तो पता ही था. So yeah, I think Stuttgart is the only one. Even if Bruges loses to Man City and the results go the way we've predicted them, Bruges can still make it into the top 24. 11 पॉइंट्स पे लेके बॉटम 4 ऑफ द टॉप 24 होंगे. यहाँ पे जीडी आई थिंक थोड़ा सा मैटर करता अगर बेनफिका वगैरह जीत जाती, बट सिटी शुड बी इन देयर. नाउ अगर हम ब्रैकेट व्यू देखें, these would be the playoffs then, where अगर हमारी टेबल ऐसी दिखेगी, whatever this table is, ब्रैकेट व्यू में, here are going to be the knockout phases games.
Either Monaco will play Sporting or Monaco will play PSG. Same with Feyenoord. PSV versus Dortmund or Lille. Bruges. Man City versus Real Madrid or Man City versus Bayern. Basically, if this is how the table goes, Man City will end up playing either Real Madrid or Bayern um, in the knockout phases. Same with Benfica, can play Bayern Munich or Real Madrid. Uh, Brest and Celtic, Atlanta, Juve, so nothing there. Monaco, PSG, वो तो अब खैर, it's all inverted now. That's the thing. And so this becomes the easiest bracket, and इनके जो winners होंगे, whether it's Man City versus Real Madrid and Benfica versus Bayern या Man City versus Bayern, Benfica, Real Madrid, इनका winner will either play Atleti or Milan. It's crazy. Where does Arsenal go? Oh shit, Arsenal or Inter. That's not a bad seeding for us actually, considering आप इन चारों को खेल सकते हो. Juve would be an interesting one versus Arsenal. Atalanta again would be crazy. बारसा एंड लिवरपूल खेलेंगे या तो पीएसजी को या स्पोर्टिंग को या मोनाको को या फायनोर्ड को. That's gonna be crazy. All right. So some really tasty games in this way, man. Yeah, yeah, yeah. City would be cooked in that sense, why? City would be absolutely cooked in that sense. Um, City versus Madrid won't gonna happen. Madrid will finish 11th, 12th position. So now let's do one thing. Now let's do one thing. Let's change some of the results. Let's change some of the results, okay? Let's change some of the results. How do we change it? We go back to the league phase. Now, chat, let's do one thing. Let's make PSG draw. Let's make PSG draw. Let's make City also draw. Does anything change? If City draw, they're out. So that's one thing. If City draw, they're out. Okay, let's keep City winning. बार्सिलोना को एक बार ड्रॉ कराते हैं. इसके बाद अगर हमने ये टेबल बना दी तो कुछ चेंज होगा. हाँ यार, बहुत चीज़ें चेंज होंगी एक्चुअली. पूरे सीड्स चेंज हो जाएंगे. फिर सिटी विल प्ले ईदर मैड्रिड और यूवे. सिटी बेसिकली, इफ सिटी विन, City is basically probably gonna end up playing Madrid or a big team. If City win, देखो अगर आप यहाँ से चेंज कर दो, चलो सिटी को तो जीतना ही पड़ेगा. बट अगर पीएसजी जीतती है, is there a situation where City will play Dortmund or Bayern then? अगर पीएसजी जीतती है, या ओ मैन दैट्स क्रेजी एक्चुअली. अगर आप एक एक गोल चेंज कर लेते हो, इफ ना 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 अगर सिटी ने ब्रूज के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया ना मेरे भाई, देख मैं भी दिखा देता हूँ. इफ सिटी ड्रॉ अगेंस्ट ब्रूज ना, दे आर आउट 25. फिनितो फिनितो. सो सिटी हैव टू विन. दे जस्ट हैव टू सी बाकी में क्या स्कोर होगा. There is a very strong chance we see a City versus Bayern or a City versus Madrid or a City versus Juve. Knockout is two-legged. Of course, it's two-legged, but this is just one of those things. City winning 2-1 is better than City winning 3-1, is it? Let's say you put 2-1. No, yeah, it doesn't really change. Again, I think you have to win. I think City has to win. It's just about how much do other teams win by. For example, अभी हम बारसा को जिता देते हैं. एक काम करते हैं. Let's say in some crazy world, Atalanta win 1-0. Some crazy world. Then also City will play a big team. In fact, is City the only one who's going to play a big team then? Or then Arsenal comes second, right? Because अगर बारसा हार जाएगी तो देन आर्सेनल के ऑड्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं. भाई अटलांटा जीत जाना प्लीज, अटलांटा. और हम भी जीतना चाहिए फिर तो उसके लिए. या चैट, अगर अगर ड्रॉ होता है बारसा का, या बारसा स्टे सेकंड एंड आर्सेनल की सीडिंग आ जाए इंटर के साथ, या आई थिंक I think this is gonna happen, chat. I think City will play Bayern or Real Madrid. I think नहीं नहीं नहीं, कप टाइड है यार. मार्मूश फ्रैंकफर्ट नहीं, फ्रैंकफर्ट तो चैंपियंस लीग में नहीं है ना, तो फ्रैंकफर्ट में आ जाएगा. आ जाएगा. मार्मूश इज हियर एज वेल. विल विन फॉर श्योर.
problem for City is not the attack, man. It's the bloody defense and midfield, yaar. Barca jeet jao. All right, let's look at some other teams. Let's look at where Villa is. Karan Mai ke liye. Where is Villa? First of all, in the table, where is Villa? If these results go this way, Villa is 8th. So Villa are damn aage. But who are they paired with? Okay, so with Leverkusen or Villa, they will play one of these four teams. Villa will play one of these four teams depending on who goes through in what. Atleti Milan on this. Oh, bro. Oof. 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 That's crazy, man. But yeah, I think City has screwed that. I think City has screwed. I mean, they will have a very tough run. They will have a very, very tough run. Knockouts के लिए cup run doesn't matter. It matters unless आप same UEFA coefficients. For example, अगर आर्सेनल सेस्को साइन कर लेती है, सेस्को इस कैंपेन में apparently नहीं खेल पाएगा. Bayern is not playing well in knockout matches this year. Bayern, yeah, I think is if the team is second, बहुत easy fixtures रहेंगे. सही कह रहे हो. Look at this. You will have these fixtures. मतलब जो अगर बारसा है they will face one of these four teams and अगर in some scenario बारसा हार जाती है, where is my team Barcelona? Please बारसा, where are you? बारसा भाई हार जाओ. अगर बारसा हार जाती है तो Arsenal will play one of these four teams and Barca will be paired with Inter. मतलब Barca will basically play then Celtic, Brest, PSG और Madrid. Barca essentially इनके साथ खेलेगी. So it's a tough one, man. Um, अगर आर्सेनल हार जाती है या ड्रॉ करते हैं, मान लो हम 0-0 करते हैं, देन क्या होता है? लेट्स से आर्सेनल ड्रॉ. ओह फॉर फक्स सेक, आर्सेनल नो वे. अगर आर्सेनल ड्रॉ करती है 0-0 छोड़, मैं कहता हूँ 1-1 हो जाता आर्सेनल जिरोना का. ठीक है, बाकी सब सेम रहता, आर्सेनल जिरोना 1-1 हो जाता. लुक एट दिस, आर्सेनल विल प्ले ईदर रियल मैड्रिड, बायर्न और मैन सिटी. वी कैन नॉट फिनिश 5th 6th भाई. No fucking way. What if Arsenal loses? Does that help us? Does losing actually help us? No, it doesn't. So you have to win. You have to win, bhai. Sorry, Arsenal. You have to win, brother. You have to win. You have to come top 3 or 4. You have to come top 3 or 4. Oh man. Oh man. ना 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 ड्रॉ से भी नहीं होगा भाई. Oh, bro. Imagine, man, having this UEFA campaign, ठीक है? And your opponents can be either City, Bayern, Madrid, or Benfica. Brother, okay. Tell me some other result to change. Tell me to change some other result. Finishing top 8 is also not enough, man. Oh, God, bro. Pull this for Spain and us. अबे यार. अच्छा, tell me what other score to change. Any other score you want to change? Left पे देख लो. Sporting Bologna, PSV, Liverpool, Stuttgart. What happens if Stuttgart wins? PSG is out. Then PSG basically gets replaced by Stuttgart. What happens if it draw? PSG is in, Stuttgart is in. फिर क्या results होंगे? Oh, good bracket again. Where is City in this one? Oh, this actually helps City. Oh fuck, but City हमारे bracket में आ जाएगी उसके बाद. अच्छा. हाँ. देन यूवे अटलांटा खेलेंगे या तो सिटी के साथ, या तो अटलांटा वर्सेस सिटी या फिर अटलांटा यूवे वर्सेस सिटी. यूवे वर्सेस सिटी आई थिंक सिटी विल टेक, बट दे विल एंड अप मीटिंग ईदर आर्सेनल और इंटर. दैट्स अ टफ वन एज वेल. सो वी नीड ईदर पीएसजी टू विन और वी नीड ईदर पैरिस टू विन टू मेक श्योर सिटी और हम ना खेलें. आई वांट अटेटा बॉयज. चेंज इंटर रिजल्ट. इंटर का क्या रिजल्ट करें? Ayushi says because there's no big team. No, Ayushi. We saw some crazy brackets here. Look at this bracket. Like, right. For example, in this bracket, Ayushi, Man City play either Bayern or Real Madrid in the knockoff, in the playoff. All right. You want to change Atalanta and Brest. So you want Atlanta and Brest to win. Oh, you want Madrid to lose. अच्छा ये भी है. ये भी है. अच्छा चलो. Let's say Madrid loses and Brest wins 1-0.
Cool. Um, and who else did you say? Atlanta also win. Okay, yeah. So both basically both Spanish teams lose. So let's say 1-0 1-0 हो जाता है, ठीक है? Yeah. चलो फ्लिक टीम है तो हम एक गोल तो नहीं मारेंगे. Okay. So if Atalanta also wins, so basically Barca loses and Real Madrid loses, then Arsenal comes second. So our pairing actually becomes not so bad. Not so bad at all. Arsenal is fine. Where is Man City? Man City के लिए actually this works out pretty well, you know. They will either play Brest or Dortmund in that case. And आगे उनको Atleti या Milan मिलेगी. Real Madrid के लिए this becomes dicey because then they will play either Bayern or Juve. And then उसके आगे Inter या Barca. So Madrid can't afford to lose to start Brest. And Villa will play either these three. Villa will be out of top 8 then. Okay, fair enough. And they will play PSV Bruges में से कोई, and then Leverkusen Atalanta will be a good one, man. Be a good one. But yeah, actually a loss by the both Spanish teams ना City के लिए actually बहुत अच्छा हो जाएगा. सही बात है, सही बात है. So many permutation combination to see certain club win 16th times as Wakan. अच्छा. आर्सेनल प्लीज ड्रॉ कर दे अब भाई, हम तो ड्रॉ करेंगे तो खात्मे भाई, खात्मे. But yeah, this is a simulation and it's a nice fun simulation. Again, I'll put the link. आप अपने results कर करके सिमुलेट करके कर सकते हो. केयस है, तो केयस तो है. बायन को हटाओ, हमें नहीं खेलना यहाँ भाई, किसी को भी नहीं खेलना बायन से. But yeah, that it's chaotic. I've put the link in the chat. आप खुद का कर सकते हो जाके. Try it yourself. I'll end the Arsenal वाला poll also. But have I put the link? Yeah, I've put the link. So आप उधर खुद जाके कर सकते हो. You can tag me on Twitter if you have some crazy matches and stuff like that. Tag me on Twitter at Global Waffles दोस्तों. If you haven't. And अगर आपको कहाँ दिखेगा Global Waffles? ये रहा bottom right पे Global Waffles है. So that's my Twitter if you want to tag me on that. साथ में स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. कोई फायदा नहीं है, सब का बारसा जीतेगी यूसीएल से चौंकी. अरे चौंकी दास, guys, check out Chonky Das, man. I will say one thing: if you're watching Chonky's video today, don't watch it on loudspeaker. Uh, I think for the full experience, you should have noise cancelling earphones, especially the ones which go straight into your ear. Now, full HD, EQ badhao, put on isolation mode, whatever your thing has. Not available in India? What the hell? UEFA की site available कैसे नहीं India में? So yeah, I'll just say, listen to Chonky's latest video through proper earphones, man. It's a master class in audio. You will be blown away. Um, so yeah, yes. परितोष को पता है. परितोष ने एचडी में सुनी है चौंकी की वीडियो. बारसा को लिवरपूल ही नॉकआउट करेगी. लिवरपूल जो भी सेकंड, और लिवरपूल तो फर्स्ट फिनिश करे देखो, अनलेस लिवरपूल लूज एंड बारसा विन. बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. लिवरपूल बारसा मेरे हिसाब से आर नॉट मीटिंग टिल द फाइनल, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग. Need a Chonky and Daksh chill stream. Yeah. Why Queecha didn't play Daksh? I don't know. I think कुछ होगा सीन. Maybe he's not ready. It takes time, whatever it is. Maybe he'll be ready. मैं एक बार एक चीज देखना भूल गया मैं. यूसीएल का प्लेऑफ का स्केड्यूल कब है? प्लेऑफ डेट्स. What the fuck? Fixtures and results. ये क्या है? अबे चैट, किसी को डेट्स पता है क्या? When are we seeing? अच्छा, नॉकआउट राउंड का. ओके. 31 चैट, 31 जनवरी को प्ले ऑफ राउंड के ड्रॉज होंगे. एसेंशियली कौन सा पेयर किसके अगेंस्ट खेलेगा. सो व्हेन वी हैड दैट टेबल वाला थिंग ना, कि वेदर मड्रिड विल प्ले इधर बायर्न म्यूनिक और सिटी, तो वो देखेंगे कि मड्रिड वर्सेस बायर्न होगा या सिटी टाइप्स होगा. सो 31 को ड्रॉ है. लोग कह रहे 11-12 फरवरी को होंगे उसके फर्स्ट लेग्स, एंड आई एम अज्यूमिंग 1 वीक लेटर विल बी द सेकंड लेग फेब में. एंड राउंड ऑफ 16 कब से शुरू है? Who knows, brother? Again, this is something which is very confusing. Yeah,
इसकी क्लैरिटी अभी तक मिली नहीं है. How do you see Barcelona performance? Do you think comeback was unnecessary given they already qualified for the next round? It wasn't. Winning is never unnecessary, brother, for two reasons. One, you need money, and the higher you finish, the more money you get. But also, finishing higher means you um, avoid the big teams. So I think it's good for you. It wasn't unnecessary. फेब में स्टार्ट होंगे राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 की क्या बात है, मार्च से स्टार्ट होंगे. मार्च तक साका भी आ जाएगा, सो दैट्स गुड फॉर अस. ऐसा यूरोपा लीग टीम प्रेडिक्टर है, देखें. यूरोपा लीग प्रेडिक्टर, यूएफए गेमिंग. आई इट्स जस्ट द प्रेडिक्टर मैन, आई डोंट थिंक उसमें वो है. सॉरी दोस्तों, यूरोपा टेबल कैलकुलेटर ना, नथिंग नथिंग, थर्ड पार्टी वाला ही है दोस्तों. you'll have to like google it and stuff. Champions League gets the coolest toys, man. That's what we get. Bro, I'm a Madrid fan, but I love watching this type of stream. Great content. Thanks, Vishwajit. Amazing to have you here. Yaar. Amazing for all the Madrid fans to be here. And of course, Chonky also. मेरी चैट्स क्यों नहीं दिख रही? लाइटनिंग फ्यूरी सेज यार 360 लोग हैं, कभी कभी मिस हो जाती है, बट इस बार दिख गई मुझे आपकी चैट. March 4, 5, 11, 12. Oh, Saka won't be there then. Saka won't be there. Down syndrome Diddy says he'll invite me to a Diddy party. Fantastic, fantastic. ओके, चलो चैट मजे आए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. स्ट्रीम लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आज की वीडियो चेक कर लेना रिव्यू वाली. देखते हैं आज क्या होता है यूरोपा लीग में. आज यूरोपा लीग के मैचेस कौन से हैं? आर देयर एनी बिग गेम्स हैपनिंग? Are there any big games happening? Azi versus Roma, Bodo versus Maccabi, Porto Olympiacos, Fenerbahce Lyon, Hoffenheim Tottenham. Oh, this will be fun. Oh, it's starting in like 40 minutes. Okay, cool. So Hoffenheim Tottenham, जिसमें Tottenham are missing like 13 players. United versus Rangers. Chat, if United don't beat Rangers now, go to Mohawk stream and write शर्म कर लो. Rangers को तो हराना चाहिए. Where is United in the table? United is 7th in the table, so they will probably make the playoffs. Rangers are 8th in the table. Spurs are 9th. So Spurs, if United lose, they can be out of the top 8. Crazy. Lazio is first. Athletic is second. Atletico Besiktas ने हराया ना? Crazy यार. So Athletic is second. Athletic could have been first. Anderlecht, Lyon, Eintracht, Manchester United. Okay. क्या लगता है चैट, कौन जीतेगा यूनाइटेड वर्सेस रेंजर्स में? फीफा बाबा के साथ में. हाँ यार, मैं और बाबा भी खेलेंगे डिस्कॉर्ड पे फीफा. वी गॉट्स टू प्ले. Lazio Sociedad would be interesting. You're right. You're right. Very, very right. Okay, chat. See you all soon. Okay, I'm gonna take your leave now. Good night. Good night. Good night. Enjoy and please show some love to the channel. All right. See you. Bye bye. ये सारे questions we'll answer in another stream. चलो. See you tomorrow, boys. See you for another stream. Bye bye.